any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once become addicted. If I rap it, then I let it. There's no capping, I'll be breaking this. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. You created a business. Now, create videos for your business. Hello guys, good evening. This is narcos again. Hey Arvind, how are everyone? Hope you are doing fine. कैसे हो? सब बढ़िया. How are you? How are you? Welcome back. First of all, I'm sorry थोड़ा लेट हो गया because पावर इशू था. कहीं बात करने भी गया था एंड वहाँ लेट हो गया एंड लेट होते होते ऐसे हो गया और माफ़ कर दो. माफ़ी चाहते हैं हम ये देरी के लिए. ठीक है.
Welcome to the Bhasad. South or north central. Is it a U? No, Negative. to the right, Right upper ramp. Towards what do you say? Elgin Avenue. He's moving again west towards the Vinewood. Will be crossing one PD. It took a right westbound Kingston. Right again. Right again. Going towards Battery. Going towards the Battery ranger station. Guys देखो to चैनल the right बहुत again, लो चल crossing रही the है ridge. आपका थोड़ा पुश चाहिए मेरे को आई एम लूजिंग सब्सक्राइबर्स Yes, you can प्लीज do. शेयर करो सब्सक्राइब करवाओ गाइस Left, प्लीज सब्सक्राइब करवाओ left westbound Wild Horse Drive. Charger will go for the refill. प्लीज गाइस इट्स अ It's हम्बल Exact Total Exactly. joining then. Wild Horse Drive westbound in the Vinewood area. Caudal join in. Charger is going for 20 right. They don't Medium drive drive. westbound Vinewood. Head up Vinewood 50. area. Head up 50. आ रहा हूँ. सब्सक्राइब करो गाइस सब्सक्राइब करो प्लीज Gonna be Milton northbound Road- Milton Road right now. northbound. You focus on landing. A I'll form. get the forms. Northbound Milton Road. Going which side? Westbound. ऊपर जा रहा है. What do you say? Outside. At a minor 50 coming back again. हाय गाइस Coming गेम eastbound, वेलकम टू द Milton स्ट्रीम Road ब्रो वेलकम A plus ही है ना sure. Yeah, I'm sure. लिटरली मैं ये तो कितनी गाड़ी है? Comment. नहीं है भाई. A plus में नहीं पकड़ पा रहा था. A plus ही होगी. आपका क्या मैसेज नीचे आ रहा है? बहुत अच्छा लगा नीचे आ रहा है. Heading towards the city. नीचे आ रहा है. South West Vinewood, Milton Road, southbound. Head up 50 again. थैंक यू ब्रो और Seven. I mean, have a given you Rockford. Have a keys. किसका लग रहा हुआ है? ना स्विच कर लो इसके लिए. 82 आ जा. 2 आओ. ये बढ़िया फॉर राइड अलोंग डिस्पैच रात को नेटी टैग ही नहीं देख लेजर टैग अच्छा था देखा था गाइस लेजर टैग अब जो जिसको समझ में नहीं आ रहा है svrp का भाई कल फॉस्टर दिखा रहा था हम देख ये गाना मत कर out with ये मेरा कॉल साइन था 316 कॉल साइन भी हेलो साइनी वेलकम टू द स्ट्रीम क्या हाल है ऑल वेलकम प्रणा वेलकम टू द स्ट्रीम ऑल गुड 503 dispatch any actives and video for Adelo There is an active on radio too. Don't know if they need additionals for it. video for Adelo I'm currently solo, but we are the only units here, so I think we can go solo.
There is an active 99A. No one's going after it. We can go for it. .603 responding to the 99A. It's a drafter class A, silver on black. Tracker is currently moving, I think. Traffic current 20. Tracker is going north on Great Ocean Highway, but I'm near Rockford Hills. I'm gonna try to intercept from Beachy Canyon Road. Anyone else other than us two in this channel? And for, like, let's try to intercept them. It is going towards Route 68. 10-4, I'm on Mount Vineyard Drive. I'll try to intercept it. From North Rockford. चाय नहीं पी अरे नहीं पिया ब्रो तो वाइफ इज टेकिंग a nap थोड़ी देर में 3:30 को स्ट्रीम शुरू करना था 4:30 I think he's entering the Fort Zancudo. 10-4, he's entering Fort Zancudo. He might hit Great Ocean Highway again, so continue there. Want me to go to Great Ocean Highway? Let me check the tracker again. Yeah, you just passed him. He's going back to Great Ocean. Passed him? No, I don't see any vehicle. Oh, negative. Negative. There's another tracker here. I think they're at R1 Trail. Sorry. The tracker is currently going north on Great Ocean. Vehicle is A+, right? On the dispatch, it shows it's A. Vehicle is heading towards the fishing spot, going off-road. There is no delay in the tracker? No, there is delay, like 5 to 6 seconds. I just woke up at 3:30. Wow, great. I'm सुबह 7-8 बजे उठ जाते हैं. आज 10 बजे उठा. 10 बजे उठा, 11 बजे से 2 बजे पूरा पे stream and then. He might go towards Stab City and hit the Route 68. So, what's your current 20? Entering Valeto in next 2 minutes. Great Ocean. Okay, let's go. Is there an activity like? We are trying to locate a 90. The tracker is disabled. I still see the tracker by the way. We are Yeah, the solo tracker unit, so currently at Cassidy Trail. Stand by for direction.
might have gone left or right, I'm not sure. From vehicle Casimir Trail, description. it's going towards Sandy Shores or Red Ocean Highway? Hello, Stand by, the tracker needs to update. Hello world, welcome to the stream. He's moving. Stab City, he's coming towards the Yeah, white he's tracker. coming towards me. He's coming towards me. Yeah, I got eyes. What happened? We have a 99A 99 vehicle A. 99A and it's in Stab City. It's a drafter. Heading towards. Respond to 13A. Responding to MRPD. I'm responding to Respond MRPD. to 38. Alright, McCoy, keep the eyes on him. Other units respond to 13. Juggler. Everyone juggler. If you see anyone. If you see any. I'm near Mark. Should I just continue on this 99 or should I back off? Check if enough units are there for 13A or else respond. There's a shootout going on, I guess. Mission, bro. A from. Okay, I'm 76. फिर भी मार दिया. 76 now. इसको मार दिया? Yes, ma'am. जुगलर दिखे तो मारो. Cash ma'am is down. किसको मार दिया? I need 77. Cash आ रहा ma'am. हूँ, on the way. Every unit break off. I'm leaving these arms. Be on lookout for juggler. Description of the juggler. कैश को उठाओ और पीडी लेके जाओ. कैश को उठाओ लेके जाओ जल्दी पहले. कौन सा जुगलर कलर? Black, graphite black. You got plates, right? Flag it there. Yeah, it's solid flag. Negative, the plate is not flagged. All up plate ही सोए थे फिर. हाँ. 76 to pillbox plus 1 officer down. Plate में नहीं. Be on lookout for black color juggler. Place flag also. अकेले देख के मारते हैं वाइन से कुछ होता तो है. चल एक जगह यहाँ से. Where was the juggler last seen? Outside at region. Alright. I'm gonna go on Los Santos Freeway. Hope it comes this way. Negative. I'm coming from Los Santos Freeway. No, I don't see no black juggler. It's still in the city. They won't be coming. They won't be going outside city. They're inside somewhere. Yeah, 10-4. Mark, आना मेरे साथ. Mustang. Who's in the Mustang? I'm in the Challenger. Especially if possible, don't go solo. Possible go ride along somewhere. 200 to Matt. 10-4. 25 at Captain's office, please. Sir. Is cash secured? Yeah, she's secured. I need double up units for her bike. I will get it. I'm sorry. I thought I dispatched anybody for ride along now. Yeah, 10-4. I'm on Route 68. I'll come to MRP here. So. $200 will be off comms. हाँ ब्रो दैट मैं थोड़ा जल्दी सोता हूँ लेट भी सो जाता ना सुबह उठ जाता मैक्स टू मैक्स 9 लेट नहीं होता fuck my god. लग गई. Alright, show me 41. Any actives?
Cash is down, but we have enough units. Searching for a Graphite Black. Yes, back on duty. The Yeah, bro. 99A tracker is still active. Should I pursue it? It's on Great Ocean Highway. Bro, किसी ऑफिसर को पेल दिया तुम्हारा है ना bro? कोई दिख तो आया है। ये 99A के ट्रैकर को। Private officers, Aaron, 20. Yeah, upper garage, like I'm exiting. Are you alone? Yeah, I'm solo right now. Coming back. हाँ भाई आरन चलो आज गाड़ी में आरआर करेंगे चलो। हेलो सामने गनशॉट्स विजन पे। RR time with my boys. Let's go. मैं क्या पूछ रहा था? I got eyes on a drafter. It is sitting south on Great Ocean Highway. It's got speed deficit on me. Can you please confirm the number? Number? The plate? You mean the plate? 10-4. Yeah. Stand by. 135? I don't know. I tend to keep. The tracker is still active. It's going south on Great Ocean Highway. You're joining. The vehicle flagged because I heard the beep, but I don't know if it's the same car. It matches the description though. Same color. Tracker. Got eyes. Heading towards Great Burger Shot right now. Aaron, hello? How much time? आवाज नहीं आ रही Left's Aaron? gonna be westbound San Andreas Avenue in front of Burger Shot. Gonna be eastbound San Andreas Avenue. Suspect continuing eastbound San Andreas. Aaron, इन चूतियों को ये भी नहीं हो रहा है। क्या बस? अभी आ रही है। भाई ट्रैकर डिले भी नहीं है इसका। Left's gonna be westbound occupation. Right northbound Power Street. Right again gonna be eastbound Havoc. PayPal का आपका? Left gonna be joining LS Freeway northbound. 966. ओ भाई 1 टन। आपका पेपल 1 टन है क्या? It's an A CVPI. 10-4 copy. Gonna be stopping, changing drivers, I believe. Yeah, the tracker has been disabled. A firm. people shooting at us. 20. मार्क चलाते रहे, पीछे गाड़ी फॉलो कर रही है, वो शूट कर रही है. Dragon Benq here. A firm, I need 78 ASAP northbound LS Freeway. M4. Red color jugular. Oh, that was okay. सुन पीछे चल। Dispatch we need urgent 78. 76. Make it quick, guys. Get us through you, right?
Open fire on a red color jugular. Explorer, you're fine. Yeah, I'm good. I think McCoy, it was not a jugular, it was a Benq driver. Hey, confirm the Whatever it was, vehicle it was identity red and color. then shoot on it, okay? तो है आरन, ये वाला साइरन चेंज कर भाई. कान चुद गया मेरा. Officer down. I don't see any. I'll be taking care of it, no worries. Okay, then go. Left exit towards grapeseed. Units rolling down towards grapeseed, please. गन है हाथ में. सुनो, Catherine B is a DOC. Copy that. Actually उनको engage करना था. It's much better than officer. ये लोग शायद दूसरा बार. What's the current 20 on the drafter? Grapeseed. Grapeseed. Yeah. तुम फ्लिपकार्ट में हाथ में गन रखोगे, ठीक है? Shoot क्यों किया? Like, Steve, what was the reason why they shot you? They didn't shot me, to be honest, like, I don't know. Copy that. I think they shot the CK or I don't know. No, these people were not behind this 99A. I think these were the same people who shot Cash. Maybe. गाड़ी ठीक है अपनी, वो नहीं हुई है, बस पलट गई थी. बट करंट वो डोर्स गए. अगर शूट आउट तो हम डाउन हो जाएंगे. इजी टारगेट. मैं डोर लगा देता हूँ, लोड लगा देता हूँ. You have visuals? Hey, from West Joshua Road. Gonna be continuing towards the city. Southbound Joshua Road. गाड़ी कौन खड़ा करता है भाई यहाँ पे? ओए रड़ा, अरे विराज, वेलकम टू द हरफराज, वेलकम टू द कोई स्ट्रीम. नहीं, पकड़ लेंगे. बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा है. आज एक बंद सॉफ्ट कॉपी भी वो दिखा. ये रेड वालों को भाई जो भी है, ये मार कर रहे थे ना. इनको मार का मतलब मेरे को सिखाना है बस. बहुत हो गया. Get the details. Gonna be southbound Shenora Road now towards the city. Entering the city. No. LS freeway से enter करो. LS freeway. Go straight towards Vinewood PD. Visual, she is spinned out. Southbound Sonora, towards the Vinewood PD. Okay, firm. Crossing Vinewood PD, westbound Alvin now. Continue straight towards the toolbox. Southbound Alvin crossing toolbox, left it clear. Keep your left clear. Here you come. Right. Westbound Vespucci. Right into the red garage. There is a block, failed block. Exiting Las Lagunas. Heading towards Low Power Street right now. He's gonna be heading eastbound San Andreas Avenue right now. What's the vehicle that blocked you? It was a Serrano.
Orange color. 4. He failed it anyways. Right towards Popular Street. Right again into the alleyway, exiting onto Steve. Sorry, I'm sorry. I have visuals, he's stuck. Okay, keep on Popular. Popular South From going towards visuals. MRPD. Westbound Vespucci Boulevard towards MRPD. MRPD. Respond to the Shelly. Yes, 76. 3 plus 1, 76. He needs to roll on potentially ASAP or every free unit. Okay, can we move that drafter 80 to radio 2? A4. Other free units just respond ASAP. 76 will be 20 left. Baba shot. भाई क्या Move, hello. Move your car. You need to wait over here. Need to wait, sir. Wait. Why? Wait. We got alarm. Wait. Don't move. What happened, man? Hello, sir. It's a company called Lawfinity. क्या हुआ? मैंने Hello, sir. What? हाँ जी. Did someone press the alarm? Wrong call, sir. Wrong call, sir. Sorry. हमारे एम्प्लॉय से बस होप तो रिप्रेस. Wrong call क्या? आप तो ये आए हैं तो उनकी सर्विसेज तो हम लेंगे. ओ भाई साहब, हमारी गाड़ी इंपाउंड कहाँ की हो? मैंने नहीं किया. क्या नाम है सर आपका? राणा प्रताप. नहीं फिर आप नहीं थे. बहुत अच्छे लग रहे हो सर. सर बहुत अच्छी आया. Man, do it fast. Just confirm my name. Let's leave. Thank you. Yeah, you can go. No worries. Potentially go for. अरे ओ भाई अरे भाई अरे ये ड्रेक है क्या? बता दो. हाँ रिक्वेस्ट है भाई. क्या हो गया भाई? इसको गाड़ी में बैठा. क्यों रहे हो लोग? आज कुछ नहीं क्या बोलते हैं सेज? इसको लेके क्या बता? ड्रेक को धर लेते हैं. अपने आप ही लोग सारे आ जाएंगे. चल भाई. 36% को 48 plus 1 same traffic. गाड़ी थोड़ा स्लो डाउन करो ना, क्योंकि शायद तुम्हारे लिए सब कुछ सही है. नहीं दिक्कत हो रही. क्या हो गया? मतलब क्या दिक्कत? गाड़ी थोड़ा स्लो करो. मैं क्या बोलूं, मेरे लिए सब कुछ सही होगा. मेरे लिए दिक्कत हो रही है. जैसे क्या गाड़ी ठोक रहा? नहीं रहा, चिपक रहा हूँ मैं. हट जाएगा मेरा. ओके धीरे चला रहा हूँ. अभी नहीं, इतना भी नहीं. When we are in crowded area से थोड़ा स्लो डाउन कर लो. केस में इट्स फाइन. सिटी में एंटर किया, मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई. मेरा आंख बंद हो गया. लाइफ इन्वेडर एंड Tornado dispatch, am I 10-2? Send it your 10-4. Okay, Tornado cash 25 at MRPD first floor briefing room. Cash ma'am is in the pillbox ward in an ICU. Oh, 10-4. 48 to dispatch, do we have a park ranger for the latest 911? 76 to the 911 for now.
Copy that forward sim traffic. I guess Noah is on duty, but he's in the meeting, I guess. Copy that. बढ़ गया भाई। कोको कहाँ पर स्ट्रीम करती है? डोंट नो ब्रो, कोको यूट्यूब पे ही करती है। स्ट्रीम सॉरी भाई। ओह
Oh, 503 to dispatch, show me 1 10 841. Mallu Pulse. Yeah, अभी देख. Okay. 503 to Captain T. अभी कोई कंप्लेंट लिखा के नहीं आ रहा. ऑफिसर का कंप्लेंट ले लो, ये ऑफिसर का, इनके पास बहुत कंप्लेंट होगी. हेलो मेरा पॉट. हेलो. आप पे कंप्लेंट है कोई? नहीं. मैं माई सेल्फ मल्लू पुल्स द FIR रिटर्न राइटर मल्लू 1041. थैंक यू. I'm a 97 dispatch. 10-2. 91 call near the Sandy Kumpur. Resuming Kurban. Anybody up for a ride along dispatch? Oh, 503 to officer RN20. He's at Sandy, I guess, for now in mind, I guess. Negative on that. I'll be 76 in the MRPD 10-9 10-4. 10-4 waiting for you. अबे यार Jack Jumanji. हेलो दीपक, कोको का क्या हुआ? ऑल गुड कैप्टन। अकेले हो? ऑल गुड। हाँ नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ। आज मैं थोड़ा पीडी में ही रुकने वाला हूँ, ज्यादा ड्यूटी पे नहीं जा रहा। सर वो हमारा मुंह पे वो बैड्स फेंक देते तो। हाँ मैंने आज बैच के लिए किया ना सबको, तो रात तक मिल जाएगा सबको। ये पे जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई। हाँ हाँ बताओ। बस इतना कर दो कि कोई 311 करता है। हाँ? नहीं वो तो चाहिए मेरे को, वो मेरा हक है।
कोई 311 करे कंप्लेंट लिखवाने को कि मैं उधर वेट कर रहा हूँ तो मैं बैग से भागती उसकी कंप्लेंट लिखने। समझ रहा हूँ भाई, वैलोरेंट चल रही है यहाँ। अच्छा रुको, मैं दे ही देता हूँ आपको रोल। रुक जाओ। गेट तो मैम। अरे पर्सनल है मेरी यहाँ पे, मैट ब्लैक आ जाओ। हैं? ठीक है भाई, इसने ठोका। हाँ क्या क्या क्या? पीछे ले साला। क्यों? पीछे तो अभी डेंट। एक तो मल्लू आंटी खड़ी है यहाँ पे। चल। नमस्ते रॉक सर। क्या दे दिया? अब आप कर सकते हैं। दे दिया। हेलो रॉक सर। हाँ ऐसे सर K9 का क्या हो गया सर, बता दो ना मेरे को एक डेट। 14 तक वेट करो, बोला ना सेनेटर मार्क्स में आएंगे, वही करना। हाँ और मेरे को डेट जानना था ऐसे भी। अरे मल्लू आंटी कैसे हो? क्या हो गया आंटी? भाई मल्लू आंटी। मल्लू पॉल्स? नहीं अपनी के आंटी। पॉल्स का मतलब? एक बारी आईडी कार्ड दिखा दो पूरा नाम मल्लू देख लेंगे। 1041। ओह शिट। ऑफिसर बैच भी दिया क्या इनको? अरे 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 मल्लू आंटी। क्या मल्लू क्या, पॉल्स क्या चलाओगे? सीवी पे आए? मैं पूरा डिपार्टमेंट चलाऊंगी मेरे। ओह अरे शिवाजी का सेकंड पार्ट है। कहीं और चलेगा। शिट 200 टू हार्डी। एक दिन की छुट्टी में गई ना, सारा डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। ऐसा क्या? अच्छा इससे पहले तो छुट्टी चल रहा था डिपार्टमेंट। और बताओ। कांच नीचे लो, मैं बाहर ही आ जाता हूँ। You attend to, but don't know Hardy is on this video. अबे लिलवर्ड सॉरी तेरा चैट मिस करते। ऑल गुड ब्रो, ऑल गुड। अभी देखा मैंने। अरे भाई अरे मल्लू आंटी का यार, हटाओ यार, सेज हटो भाई, सेज हटो भाई। इसको आरपीजी नहीं चाहिए, ये आरपीजी लेके घूमती है। ये आरपीजी लेके घूमती है भाई। चलो अरे एयरवन से लेंगे, ठीक है एयरवन से लेके ड्रॉप कर देंगे उसको। किसको? What are the units? Do we have on frequency 1? किसको बोल रहा है? Patrol officers 408+1. Can you update your call signs for me? 408 and 526. 503. क्या करना है? सुना नहीं था मैंने। पता नहीं भाई, अपडेट ही बोला था। Sir, I did. कॉल साइन अपडेट मतलब कॉल साइन तो सही है। अरे कॉल साइन तो ठीक ही है। अरे डिस्पैच तो कर दिया मैंने। एयरवन का वो लेके आए हम। रुक यार, मैं कॉल साइन अपडेट करवा के आता हूँ, बैच भी लेके आता हूँ। कौन लाइसेंस लेके आया? क्या क्या क्या? मैं अरे ये लेके आया, लाइसेंस मिल गया इसको। पास करके आए हम। अच्छा कितना सेकंड में, आई मीन कितना मिनट में किया था तूने? 130 नहीं था? 135 ऐसे ही। चल अभी चलो। सिद्धू भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो? फॉरवर्ड शो में 76 to 37 कॉल वाइनवुड। कौन सी गाड़ी है? कौन सा? ऐसी ट्रैकर। हाँ वो तो चेज हो रहा है उसका। Cypress flats, Longwood meeting room. ऑल गुड सही। Attorney to Steve. और क्या हाल है? आरपी कब करोगे? Sir, he's on ready to for the E+. अस्थिता। Attorney to Aaron, what's your rank? Senior officer. 10-9? Senior officer. Okay, 25 at first floor, what we say, briefing room. Can I get a repair kit at Vinewood, please?
For it, show me 76 to MRPD. Oh, can you provide me with the repacker, please? I need to buy one. तो ला के दे दो भाई. Turn it. For it, direct to 200 rock, sir. Is it urgent? Units at MRPD, what are you doing? You do want 1041 dispersion actives. Nah, Maverick, get me repacker at Vinewood, please. 10-4. नेक्स्ट वीक से आरपी में आऊंगा. नेक्स्ट वीक से मतलब एलटी में. Then update me already. How much time is gonna take? Sir, 2 minutes. I'm providing a repair kit to Matt. 10-4. आवाज आ रही है? Did anyone impounded a red in color jugular? 74 from my side. Maverick? Go ahead. 25 at first floor briefing room. I am on my way. Aaron, you can continue with your patrolling. I will deal with check first. 10-4, sir. अच्छा लगा देख के. क्या हो रहा है? रॉक क्यों बुलाया? रॉक के खुद से चढ़ गए, वो सबके एसओपी एग्जाम ले रहा है. यार व्हाट? एसओपी एग्जाम हो रहा है? खुला है एसओपी, खुला है या बंद हो गया लास्ट टाइम जैसा? बंद है एसओपी. ओह माय गॉड, रॉक इज गॉट टू बी किडिंग मी. भाई परेशान कर दिया भाई रॉक ने, मेरे को सारे आंसर सही दे दिए, फिर भी कहता है यू डोमेटेड टू सीनियर रेंजर. डिमोट हो गया तू? व्हाट? पता नहीं, अभी बोला है, हुआ नहीं हुआ का पता नहीं भाई. कहता तो ऐसे अब तो एक्सप्लोर नहीं चलाएगा. मैंने भाई ठीक है भाई. हां फक ब्रो, जॉब भी छोड़ देता हूं मैं तो, जा रहा हूं मैं तो भाई. नहीं अबे यार मेरे को याद करना होगा क्या क्या. 603 back on radio 1. Any actors? Negative. भाई मैं एक्सप्लोर से पिट, मैं क्राउन विक से पिट कर दूंगा. मेरे क्या जा रहा है? कर दे, मैं तो कर पाता हूं. Packet. Any actors? 31519 MRPD. 311 same traffic. मैं थोड़ा दिमाग में हुआ. 2 मिनट बस. हाँ
there is a red vehicle standing outside. I mean, upper right, PD park. Is it a red color Jugla kind of vehicle? It's some old vehicle. It's a Bison. It's a Mustang. Yeah. It's not a Mustang. I mean, I don't know what vehicle it is. In the parking. Bison एक Mustang है in front of. अपर पार्किंग पे गाड़ी खड़ी है ना लोकल की. पार्किंग पे. अच्छा ये तो पता नहीं. I guess. That's Mallu auntie's vehicle. Okay. Uh, 314 to Clay Direct. Ten 9314. Do we have Clay on duty? I don't think so. Nope. बस एक मिनट. हाँ उसको पहले मार रखा.
सर जी कोई एक्टिव ही नहीं है यार एयर1 में, कोई मतलब मेरे को पता ही नहीं। एसएस आती है 37 नहीं आती है भाई, मेरे को ही निकालना पड़ता, मेरे को ही भगाना पड़ता, कोई है ही नहीं है एयर1 वाला। मैं वो बात नहीं है ना, एयर1 वाला ही नहीं है कोई ज़्यादा। जो पीछे ये एक्सप्लोर लेके रुकता रहता चल भी 35,000 निकाल। मेरे को सीपीआर लेनी है खुद का तो भी अबे एयर1 लाइसेंस चाहिए इसको, तेरे को भी, सबको ही ले लो, सभी ले लो। है तो उसके पास, स्टीव के पास है, स्टीव और मेरे पास एक साथ आया था। चलो फिर ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या मैं ऐसा भी पढ़ रहा हूँ, गांड लगने वाली सबकी। भाई कटक लू क्या? क्या हो गया? क्या हो गया? चटक लू क्या? मैं ऐसे एसओपी एग्जाम हो रहा है, बता रहा हूँ मैं, मार रहा हूँ। क्या क्या पूछा तेरे से? अबे कुछ नहीं, इजी पूछा भाई, रीजनेबल वैसे तो पिच प्रोबेबल पूछा होगा कॉज। फॉर श्योर। पिट पूछा था, केस लॉस पूछा था, मैंने पढ़ा ही नहीं भाई। केस लॉस क्या मैं रट के थोड़ा ना बैठते हैं एसओपी भाई, जो केस लॉस पढ़ो भाई। मैं तो जा रहा हूँ भाई। केस लॉस पूछा मैंने, बोल देख मैं ना मैं तो सीधी मुंह पे बोल के रहा हूँ देख। ऐसे मैं इधर हूँ, आई एम सॉरी, मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं ट्रेस पासिंग में धर लूंगा, चटक जाए यहाँ से, चटक जाए ऐसा। नहीं दे रहा लैपटॉप जाओ। पंद्रह मिनट में क्या लैपटॉप क्या करेगा अभी हमें नहीं पता। मल्लू आंटी से बात करो, मल्लू आंटी बैठी है ना सामने, मल्लू आंटी खड़ी जाओ, मैं मल्लू आंटी देंगी जाओ। सुनो, तो मैंने उनको बोला कि ना क्या पूछा, पेट पूछा, ठीक है चटक रहा नहीं चटक रहा, मैं चटकाऊँ किसका ले बस हुआ, थोड़ा कुछ काम है मेरे को करना है, ठीक। क्या गलत बोला बता। कहते हैं ऐसा भी, मैं ऐसा लिखा ही नहीं, मैंने क्या बोला, मैं एस्केलेट वेस्केलेट पूछा ही नहीं ना उन्होंने, ये पूछा बस सिंपल पेट कब करते हैं, बता दिया मैंने 3 चीजें, अब इसमें क्या कर। और मैटर फोर्स पूछा, फोर्स एस्केलेशन पूछा, बता दिया भाई। सर सीन ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, ऐसे भी तो रट के बैठे हैं। मेरे को बोला यू आर आउट ऑफ एफपी, यू आर आउट ऑफ हाई कमांड, यू आर सीनियर रेंजर, आपको बैठे हैं। अरे मजाक कर रहा भाई, हेलो। अरे यार बोला कहीं में भाई पिट मेरे को बोला। अबे आज मैं सोचा था कि रॉक्सर से कहूं बेस्ट के यार, क्या है यार सार्जेंट बनाओ, अब तो मूड चेंज हो गया। चलो सीनियर ऑफिसर प्लान के लाते हैं। चलो वेलकम टू सीनियर ऑफिसर गैंग ऑर्डर। मैं भी सोच सीनियर ऑफिसर ऑन ना, मैं नॉन एफटी हूं, मैं एफटी नहीं हूं। ऐसा कुछ देख रहा हूँ, एक मिनट दो बस, थोड़ा टाइम, बस थोड़ा टाइम।
ओके आई एम बैक गाड़ी से नीचे उतार दिया मेरे को। सबका लेंगे। ये और मैं तो अभी भी सभी सीनियर का? बने हैं, नहीं, अभी मैं भी तो डिमोट ऑफिसर देंगे, कह रहा हूँ मैं तो। जब भी डिमोट देंगे। कौन सा सब SOP? डिमोट होंगे आज सब डिमोट होंगे। SOP क्या होता है भाई ये बताओ। SOP क्या होता है वही तो आने बोला वाला है। था भाई, मैं नहीं आ रहा। fuck it. वही मैं गलत अभी फंस तो गया बने भाई। सीनियर भाई, 2 दिन में डिमोशन भाई। मेरे क्या है, मैं क्राउन से पिट दे दूंगा जाके लोड़ा मेरा फर्क। तेरी बेइज्जती। अरे तेरी नहीं अगर बने भाई क्राउन में किसकी हगाज देखी, खड़े खड़े स्लिप हो गया। मैं बताता अरे हूँ हाँ, मैं बताता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ क्या आई करना है। एम ठीक बैक है, ट्यूनर ठीक शॉप है लेके जाओ, ठीक थोड़ा है, पार्ट्स लगाओ नए, ठीक है, ये देखो उड़ेगी, अच्छा लग हवे रहा को है। चुम्मी देगी हवे को। पार्ट कैसे लगाते कितने पैसे लगेंगे ये बता दे। वही 1.5 लाख पड़ा है, 1500 कितने लगेंगे? 1500 पड़ा फिर अबे लगा देंगे। 30,000 रियो पार्ट्स पे। लगा। मैं एक क्राउन एक्सप्लोरर लेगा तेरा भाई। मैं भी एक्सप्लोर ही लूंगा। मेरे पास ले 1 लाख रखा तो हूँ है, 90,000 और चाहिए भाई। 190 की है। यस मैं भी 40 पड़े, 40 लूंगा इंग्लैंडो से ओए खत्म। मेरे पेपाल आईडी, मेरे कहाँ से पेपाल पे देखते हो थोड़ा कि एक कहाँ मिनट पे रुको। गाड़ी का प्राइस किधर है? वो किधर है? यहाँ पर सर नहीं, अंदर ऑन ड्यूटी जाना उस शेड के अंदर, ठीक है। अरे अंडरवुड दियो बे 20,000 दे। क्या ए मेरे को दे ना 20,000? 2000 रुपया। अभी क्राउन निकाल रहा हूँ मैं। चल ले लियो, 20,000 ले लियो चल। अभी देना, निकाल रहा हूँ अभी दे रहा हाँ हूँ। दे। अभी 10 मिनट है, निकाल। 3626 स्टेट आईडी है। सुन ना, मेरे पेपाल देखना, देख मैं बता रहा हूँ मेरा पेपाल क्या है। 1000 है देख। 1000 पेपाल है, 1000 रुपया दे दो। वाह भाई भिखारी हो गया। वाह भाई। हाँ जी सर बताओ। आओ अंदर। सेज चलो, सेज चलो, सेज भैया चलो। साहब बोलो बोलो। कौन सी शिफ्ट पे आते हो? और देखो मैं इवनिंग 3:30 के बाद रहता हूँ एंड मॉर्निंग भी आता हूँ। मॉर्निंग फ्रॉम 11 to 2 एंड आफ्टर 3। आपकी शिफ्ट टाइमिंग क्या है? आपको दी गई है शिफ्ट टाइमिंग? नो वन को शिफ्ट टाइमिंग अच्छा नहीं, बट आई प्रेफर इन द ठीक है, इवनिंग। मैं बट अलॉट सुबह करवा भी आ देता जाओ। हूँ। मेरे को इवनिंग 3:30 के बाद चाहिए, 3 के बाद चाहिए। मॉर्निंग नहीं आ Is पाऊंगा। it possible? Is it okay? Hey, you are trespassing, huh? I will arrest you for that. Leave this तो area. मैं आपके हाई कमांड से बात करने आया हूँ ना। सर हाई कमांड तो बात यहाँ करना पे है तो थोड़ी है, रिसेप्शन रिसेप्शन पे आ जाओ। रिसेप्शन अगर कोई नहीं है तो एटलीस्ट यहाँ पे 3-1 थोड़ी मत है, करना कमांड पंगा। चेयर लेके बैठा है। यस सर, आ जाओ आ जाओ। हाई कमांड ऑफिसर यहाँ पे आओ। आएंगे, बोलिए पॉसिबल। So I'll allow you, if possible, I'll allow to 6 to 12 वाला shift मॉर्निंग time. 6 to 12 No, evening. इवनिंग, बट आई कैन कम मेरा बिफोर भी दैट अलॉट राइट। कर दो यार, मैं तो उसी टाइम रहता हूँ। मैं तो कितना Listen, I can allow you, but I need the same response from you also for being on duty. तुम ऐसे नहीं कि 2 घंटे आ जाओगे वापस निकल जाओगे, ठीक है? कौन मैं? I'm also allowing SCV. No. It's kind of like a I'm allowing legal SCV to you those. I'm putting some resources like you're asking. So I need some effort from you also. You want your shift time to be shifted to something else. Sure, I will. सुनो मेरे को देखो, मैं क्या बोल रहा था, कॉल क्या पूछ रहा था। देखो आप मेरे को इवनिंग सेट ये कर दो, बट सुबह मैं आ सकता हूँ ना इफ आई वांट टू। बट ये नहीं बोल रहा कि इवनिंग नहीं होगा, सुबह आऊंगा तो इवनिंग भी आऊंगा। काउंट नहीं होगा ड्यूटी आज। So that will not happen. बट ड्यूटी come. काउंट मत करो, बट वी कैन कम राइट। Yeah, you can come, but you cannot clock in like digital clock in नहीं हो सकता आपको। हाँ ठीक है, इट्स फाइन। व्हाट इफ आई कम बिफोर 6 लाइक 5 4 आ गया, तब भी काउंट नहीं होगा? नहीं। ओके ठीक। Yo, what are the chances I didn't clock in today? Oh, I did not. Fuck. Anyways. Hello. अब बोलो। हाँ मैं ये पूछ रहा था, देखो प्रॉब्लम इज 6 to 12 में आ जाऊंगा, लाइक 6 के बाद until 10 में रहूंगा, बट उससे पहले भी मैं आई कैन कम राइट? कैन यू ऐसा ही नहीं 2 शिफ्ट? मैंने सुना है कि लोग 2 शिफ्ट्स में रहते हैं।
लाइक मॉर्निंग 6 to 11 to 6 और समथिंग एंड इवनिंग 2 शिफ्ट्स में आ जाऊंगा. अरे You मेरी can भी count सुन me लो on that. कोई. Alright. All right, but you need to choose one shift if you are willing to give 6 to 10 duty. तो मैं बोलूँगा वहाँ पे आप क्लॉक इन करो क्योंकि वहाँ पे आपकी ड्यूटीज कंप्लीट हो जाएंगे अगर वहाँ पे आना चाहते हो तो. कहाँ? 6 to 10. मैं देखो आप ज़्यादा इवनिंग आज बिता रहे हो देखो ना वहाँ पे. एक मिनट इवनिंग में 100% रहूंगा आफ्टर 3:30 ठीक है बट एट टाइम्स मैं That is सुबह भी afternoon आता actually. After 4 o'clock is evening. ओके आफ्टर 4 देखो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई कम बिटवीन 3 and 4 आई स्टार्ट माय ड्यूटी आवर्स ओके अंटिल 10-11 I'll be in the city उसके अलावा if I want to come in the morning like 11 I was saying, so get yourself to 6. Bro, get him a high command, dude. If there is nobody, just tell him to एक come बार back here because I have रॉक से already बात करवा have a लो chat with him. रॉक से बात He is करवा busy. लो 1 second, I'll be right back. हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं बोलो बोलो. रे क्या बोल रहे हैं आप अरे जो नीड था वो उनसे बात कर ली थी मैंने. अब उनसे नहीं हो रहा है तो हाई कमांड से बात कर ली. रे आपका आवाज नहीं आ रही है तो मैं क्या बोल रहा था जो आफ्टरनून का शिफ्ट है ना you're basically coming to 3 o'clock and you will have only 2 hours. So what I was saying, get evening shift, so 6 to 10 or 11 वहाँ पे आप clocked in पे रहोगे as your shift time and आपकी ड्यूटी आवर्स भी कंप्लीट होंगे. समझ रहे हो? अगर आप अभी आफ्टरनून शिफ्ट में आना चाहते हो तो आपको वहाँ तभी क्लॉक इन करना पड़ेगा और कितने बस 2 घंटे के आपके क्लॉक इन आवर्स काउंट होंगे और वो ड्यूटी आवर्स कंप्लीट नहीं होंगे तुम्हारे वीकली के. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. मैं समझ मैं इवनिंग शिफ्ट दो मैं ये पूछ रहा हूँ सुबह का टाइम पे आ सकता कि नहीं You can come but you cannot digital clock in. Got it. ठीक ओके वेबसाइट पे डिजिटल क्लॉक इन नहीं कर सकता बट यहाँ ऑन ड्यूटी आके आई कैन डू माय ड्यूटी राइट या यप ओके इट्स फाइन ठीक है मेरे को इवनिंग शिफ्ट दे राइट. मैं बात करता हूँ फिर रॉक्समिथ से. Where did he go with? क्या हुआ मैवरिक सर? भाई क्या ही बताऊं क्या क्या हो गया? तुम भी डिमोट हो गए 1 हफ्ते के लिए. 1 हफ्ते के लिए? हाँ. क्यों? भाई क्या एसओपीज में क्या रट के आऊं क्या मैं क्या करूं नहीं मतलब बात तो सही है उनकी रट के द्वारा. कुछ तो हो रहा है भाई अभी तो सर्वर रिस्टार्ट होगा When they get
I can't open the fucking gate from the morning, man. सर मैं नहीं आया था सर, वो रियो पार कर सकते थे उसकी टीम में मुझसे गिर गई। हाँ भाई वो पूरे पिंड को बन के घूमते थे कल। हाँ भाई W को 321 नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा मेरे से, नहीं हो रहा भाई। ऑप्शन तो वैसे एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालना मेरे को, पोस्ट वो करना है मेरे को। ठीक है। हाँ कनेक्ट हो जा भाई। बढ़िया, अच्छा लगा है। भाई सच बोल रहा हूँ, दिमाग खराब हो जाता है इस इश्यू से।
और चुकचीज मैं सच बोल रहा हूँ, तंग आ चुका हूँ। Hey, darling, I should just start cheating too. How you doing? Say that again. Hello there. Me. Where the hell are you? You must want some drama. I'm gonna ruin you. I swear it was a mistake. गाइस आप चैट पे बैठ के बात क्यों नहीं करते हैं? बस आपको एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है? आईफोन 13 जीतना है। गाइस डू यू वांट टू विन आईफोन 13? मैं गिव अवे नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलो, मैं तो कुछ गिव अवे नहीं कर रहा हूँ। डू यू वांट टू विन आईफोन 13? यस नो, जल्दी हाँ ना, जल्दी बोलो। किसका आईफोन 13 जीतना है भाई? तो गाइस बोलो 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 बोलो, बोलना है बोलना। जो जीतना नहीं है ठीक है। आईफोन 13 नहीं जीतना है। चलो एक काम हो गया। आईफोन 13 क्या चल रहा है? आईफोन 13 जीतना है तो बोलो, बताऊंगा।
नहीं है मेरे को नहीं होना आईफोन 13 भाई इजी है सोच लो पहले बोल रहा हूँ सोच लो ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ गाइस सच ही है आई एम हैप्पी विथ माई आईपैड ओके ठीक है अगर ऐसा है तो क्या ही बोले अब फॉलो करता रुको फॉलो करता कहा इंस्टाग्राम पे फॉलो हाँ करो 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 जल्दी करो लिंक ही लिंक डाल रहे भाई लिंक डाल रहा है स्टोरी आ रहा रुको स्टोरी आ रहा रुको ठीक है अरे सुनो सर जी ओ सर जी तो यार हगा मैंने फिर डालना पड़ता फिर डालना है फिर डालूंगा भाई 3 बार डाल MI चुका 97 फोटो सेलेक्ट किया मैंने फोटो सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट किया पेस्ट करने के बाद कर दिया गेम तो खेलना है ना गेम खेलो भाई गेम खेलो और स्क्रीनशॉट्स यू नीड टू शेयर विथ रिजल्ट ई स्पोर्ट्स ठीक है
बीजीएम में चलेगा। जो देखो प्ले एंड विन जो भी है वो उस जो ऐप तुम डाउनलोड करते हो ना, उस ऐप में जो क्विज गेम्स है उसको जीतना है तुमको। ठीक ठीक ठीक। भाई इंस्टाग्राम सच बोल रहा हूँ, दिमाग खराब कर दे। ओके डन। डन। तुम मेरा स्टोरी देख लो गाइस, चेक। सर देयर इज अ गिव अवे गोइंग ऑन गाइस, यू कैन विन अ आईफोन, ठीक है। फॉर दैट यू नीड टू गो टू माय इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला है, स्टोरी में एक लिंक है, चल रही है वो वेटिंग। लिंक से एक ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। वो चलो भाई यार मैं ऐप जल्दी मीटिंग डाउनलोड करूँ। करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज दैट कोई एक गेम खेलो, क्विज गेम खेल के जीतना है। And उसका screenshot you need to share with Resilience Esports, and they will you'll have an opportunity to. Alright, anyone has wants to share? No. Alright, does anyone need food? I'm gonna order some. Nah, I'm full. Yes, I do. How many spot units do we have on duty? हाँ चलो। Alright, the delivery guy is not in the city. We're gonna starve to death. Sad. Yo, does anyone know the process for like checking the garages in which the winch clutch vehicle is in?
यस उनके फोन से। फोन से नहीं 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 कर नहीं सकते कोर्ट ना। हाउस में एक ने फोन से नहीं करना होता वो कोर्ट हाउस में एक कोर्ट हाउस सिस्टम में है नहीं कर सकते तुम विंड स्क्रैच। कर सकते पिछली बार उसी से तो किए थे हाथ से उसी से अच्छा तो अभी नया आया होगा फिर पहले कहाँ था नहीं अपन नहीं ने देखा जब। पहले से ही था वो हमें एक्सेस नहीं करना आया था अबे ये बताओ पॉकेट खुल रही है हाँ खुल रही है ना मेरी क्यों नहीं खुल रही। कोई नहीं, वो पॉकेट का साबुन स्लो है, थोड़ा टाइम दो खुल जाएगा। अब मेरी भी इसका मतलब समझ रहे हो ना, पॉकेट जब Check पॉकेट का disappeared. साबुन स्लो होता है तो गया देखो। चीफ आया नहीं अभी। तुम तो हेड सार्जेंट हो ना। नहीं सर दिल से एक्स चीफ। भाई हम भी दिल से एक्स सार्जेंट हैं, बोल रहे हैं क्या? चुपचाप जो रैंक दिया है वही रैंक पे बैठे हैं। Yes, we'll wait for other cops. Then we gonna start. 30 पे चालू करेंगे, ठीक है? आने दो उनको। कोई नहीं, आज कोई ना कोई एक और आ ही जाएगा। मैं कह रहा हूँ रॉक सर वो आईडी कार्ड थोड़ा सा बैच आ जाइए रॉक सर। रॉक सर मैं क्या पूछ रहा था, अभी भी एमडीडब्ल्यू में मेरा नाम सार्जेंट दिखा रहा है, सार्जेंट का यूनिफॉर्म पहन लूं क्या? आप हाँ बोलोगे अभी पहन? युवा आओ आज मीटिंग तुम लोग आओ। आज तुम्हारी मीटिंग आओ। लेट्स गो। आओ सामने जाओ, सामने खड़े हो, स्टैंड इन फ्रंट। Who allowed you to like bring the sleeve pro over here? No one did. And what should be the punishment for it? I'll go on dispatch duty. That's better. So we have everybody over here? Yep. Okay, try. You can start the meeting today. I'm not gonna start it. अरे वालेकुम अस्सलाम उबैद भाई, मैं नहीं I देखा, need I'm few sorry, sergeants to कुछ come देख रहा forward if they have any points. Stand next to me. Let's begin with the meeting. Good evening, everybody. So the points we माफी। made today are the HR announcement which was made by Brian Walker about the shift. If you are a part of evening shift, then please clock in at that time only. Do not clock in the afternoon shift. That hours will not be counted, and you will be forcibly clocked out from that shift, the afternoon shift. Right? About the raid and the rest of thing, which are SWAT things. Like if you are putting siege and search warrant and if it is getting approved, contact the leading SWAT members, Jake Maverick and Phil Smith, because we have a lot of warrants pending about raid warrants, siege and search warrants. So make sure those are cleared and let's begin with the new ones which are coming in. Because I see a lot of them are still pending and nobody's approaching the SWAT regarding that. Okay? Acknowledge him, guys. Acknowledge him. Yeah. We'll be going for raids today, alright? If anyone of you has any pending warrant, let me know. You can mail him actually, and you can also be the part of SWAT. Reporting officer has approved. If reporting officer's siege and search warrant is approved by the Leo. Sorry, DOJ department. Then you can also be part of the SWAT they are doing. Regarding the situation regarding the 80s, which is happening on Radio 1. I guess it is happening too much again, so make sure it is not happened and do a 311 when you get involved in a case like those. Make sure you have always a partner. Do not go solo, so that he can be of use somehow. So that you keep driving and keep
eyes on the suspect's vehicle, and the partner will do 311 requesting for backup on the different frequency, so that primary frequency, which is 1, which is always not it is not used for some other things. Okay. Anybody else has any points to be made today? If no one, then I will go. You are. Yeah, first thing is about the radio etiquettes, which I am seeing is completely fucked up. As I told you, I need radio 1 to be clear, but you guys are still not understanding. So tomorrow, as mentioned, we're just gonna have a meeting on Discord, okay? In which we will be joined with a new dispatcher who will be helping you out in a different way of dispatching. Along with it, Yuva will be assisting him as well. So you need to be. It's better you present over there. Else, from the next day, it will be difficult for you to understand how the new dispatch system is working, and all that thing. And if somebody is fucking up, we just gonna take directly actions on him. So it's better not to miss tomorrow's meeting. Okay. Next thing is about the this professionalism. That is which I personally feel is being violated too much. Like during the promotion ceremony as well, we are having what we say grenades and all that thing. The person who is like putting up the nails, are you authorized to do that? Like my first Putting up question what? was there. N- Nades. Smoke grenades and all that stuff, stun No, grenades. no one's authorized to take anything of that. Yep. So Not even why the SWAT. fuck they are why the fuck they are being used during the meetings? Huh? Like you don't know your own SOPs, then trust me, I'm just gonna take SOP exam all of yours. I don't care what rank you are in. Three of them are today demoted by myself only, which is Jake Maverick, Steve Smith, and one more guy was there. I think it was Matt Cordell. So unless you know your own SOPs, I don't know how the hell you are in the command team. So better if you fail in today's exam, you will be demoted, and during the next exam, you should be well prepared for it. Yeah, Mr. Prem. सर नीचे एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन चल रहा है 3-4 सिविलियंस हैंडकफ्ड हैं 5-6 उल्टा पीडी के बाहर Okay, we'll do one thing. Ash, you there? Ash Anderson. नहीं है सर No. अच्छा है नहीं पीछे बैठा हुआ है सबसे. I guess he's in his mind. Okay, अच्छा, नहीं Yuva है. and Steve. He's here, मेरी he's आवाज आ here, रही है? he's हेलो here. मेरी आवाज आ रही है? Yes, Ash थोड़ी and जोर से Yuva, बोल just take care of the situation. What's happening right now? Sure thing, sure thing. Yep. Right now, go. You both. Okay. Uh, about the warrants, which units are looking into this warrants? Because like, any of you were allocated just to clear out these warrants? Oh. Hello, Maverick. Okay, let it be. Yep. How many current sergeants we have? Sergeants plus one is Trey. One we have what we say, Hardy and Ash. All okay. Distinguish among yourself which guy you wanna take in. I need all of these today because two of the warrants are anyways expiring today itself. Alright, sir. Okay. And one is for like shootout inside MRPD, like. He Okay, came then inside PD to shoot. go talk to judge and put his account on monitor, man. If that is the case, if that things are seriously, then just do that things. For the shootout in MRPD, we are going to raid him, so probably we are going to find him over there. Yeah, okay. One more thing regarding account monitoring. So suppose if a warrant has been there for a very long time and you are not unable to catch that person, you can request judge to put account monitoring. So how the account monitoring system works? So whether that person go to any nearest bank or ATM, the system gives you a location of that exact place where he tried to transact. Okay, whether he tried to access his account. So you will get a notification and you can easily go and
bust him up over there. So you need to start working on the account monitoring stuff as well for the like long awaited warrants. Am I clear? Yep. Okay. Okay, I think that's it from my side. Okay. So I have a few more points that I've seen is some of the officers are responding to one situation, and once it gets over, you come back to MRPD, repair your vehicle, and just stay in the MRPD. But you do not respond to 37 calls. They're getting ignored by you guys, and 71 calls also. There are 71 calls, 37 calls. You stay at MRP, but when a 99 vehicle, I mean, a dispatch call is coming, then you will respond ASAP, like without even hesitating. So don't do that, guys. Respond to 37s also. You will get chased in that things also. Okay. So just avoid ignoring them, and the 71s also. So please respond to those calls also. There because they are also important. Okay. Because meth run bhi ho rahi hai, and oxy bhi ये कर रहे हैं वो लोग. They are doing a lot of things which are illegal. Okay, I just got one more point. So you remember a situation happened in which one of our officer was put allegation for trespassing the area and trying to steal something from some place. Okay. I don't know whether it has been done or not because the investigation and inquiry is still going on. But I wanna tell if it would have been happened, I won't tolerate it. Like it depends on the report which comes. We're just gonna simply take up actions against you. So as being a cop, you have some integrity, you have some professionalism which you need to maintain. So again, I'm saying I have no idea whether it has been done or not. It depends on the report. But in case even if you think or try to do something, just think twice because your line of duty depends on it. Okay, so stop indulging into criminal activities. Is that fine? Yeah. Fine. Okay, perfect. Yeah, try continue. Alright, yeah, anybody else has any points to be made today? If you have, please come forward. The podium is free. After this meeting is over, the SWAT guy just stay in the room, right? Okay. Yeah, just one point from again, it was announced yesterday also. So if you are in a reporting, you are not a reporting officer, or if you are the reporting officer, please complete your MW by 24 or 48 hours. If you are not the reporting officer and someone asks you to create one, please change the reporting of. If you are not knowing about the situation, please change the reporting officer in the MDW and in person go and talk to him that he was the reporting one and he needs to write about the situation and inform him directly. Don't just change the name and leave it. Otherwise, it happens that after 4 to 5 days when I check, or 3 to 4 days when I check it, there is nothing written, and one of you says that there is he wasn't the reporting officer, and the other one says it's like 4 to 5 days. Don't even know my name was written there, and I don't remember the situation now. So when it's not completed, there will be warning given to both of you. It will if it happens again. It was announced yesterday also. I just repeated it. Okay. Take it seriously, guys. This one also. One more thing: if if I'm the reporting officer and my suspect is not pleading guilty, and if a lawyer is coming up and asking for the report of my incident report, and just try to contact me by mail or any other. Just I'm giving an example, okay? Because that report might be incomplete. So just contact the reporting officer and tell him that the lawyer was here to take the report, so that he will get the information and he will complete the report also. That is why, okay? कि वो ऑफिसर को ये ना हो जाए कि what if he has to put some more points in the MDW, or वो lawyer को मिल जाएगा Hello, और he Prankshu, can't do welcome to the anything. The officer stream. can't put any more points in that. That is why. Okay, so take care of this also. Please make sure you mail the officer who is reporting who has made the report, and tell him to complete the. He'll depends. It depends on the report and him that he has completed it or not. Just inform him that he was the lawyer was here to ask for his report, and he will do the further procedures, whatever has to be done. Okay. Okay. Right. Anybody else? Any points to be made? No. Right. Captain, should we dismiss? Yeah, I think you guys are dismissed. So what do we say? Ash,
You come with me. Yes, sir. All other officers can go. 4 of चाहिए Rex, Tracer. Longwood, give me 20K. वो बता आईडी आईडी Yep. अरे आईडी दे स्टेट आईडी How about to come now? 2626 आ हाँ भाई लॉन्गवुड अरे सर क्या हाल चाल Let's say bye to my बढ़िया explorer for 2 days. Player. Hell yeah, I'm 3626 also an ना आ जा officer. Hell बोल yeah. रहा हूँ मैं क्या हुआ अरे इसको सीपीए निकालनी है मैं क्या 20,000 मांग रहा मैं क्या ले ले भाई किधर लेके जा रहा है तुम्हारा अंडर में हार्डी चेंज सर कर रहा हूँ 10,000 ठीक है रुपए दोनों दे दो। चेंज अरे करो मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ ऑफ ड्यूटी CPI खरीद मैं तो मीटिंग के लिए आया था सिर्फ अभी वो भी है ना 7 o'clock एक्सप्लोरर खरीदना है। एक्सप्लोरर है मेरे पे मना कर दिया रॉकस्टार ने 2 दिन से 551 कोड 1 आओ भाई 3626 स्टेट आईडी है 3626 ठीक है 10,000 ये ले भाई गुड मॉर्निंग Ray, you check. चेक कर दस हार्डी ने भेजे 20 तूने भेजे 20 मैंने हार्डी ने 10,000 let's go We got multiple अरे बहुत 37 जल्दी जा calls रहा coming भाई from Great Ocean Highway and Hell yeah, Magellan let's go Avenue. get So some any CPM. available units on this channel? चल सीपीए तेरी लेके फिर जाते हैं 321 dispatch. Are there any free officers available to go for? Send it. पूरे Are there any free officers available to go for a raid? I am taking job. Alright, come to the meeting room, everyone. Whoever is available. भाई We have to go straight for a house raid. 76 हाँ भाई रेड करने जाएंगे चलो For the shift 3, if you are not part of shift 3, okay? And if I want to in future move from afternoon to evening shift, would that be possible? Yeah, that will, yeah. Just permanently into evening. Can I get permission only if possible for Explorer if no one is available to use? Because at times when we come in the afternoon or after Sure. 5, what Just for happens today, is huh? No, not today. Yeah, I'm it's asking. okay. So what happens is that किसी के पास Explorer नहीं होता है, we have those off-road vehicles जो off-road चले जाते हैं, Cronwick spin out हो जाते हैं. If Yes, possible. yes. But do one thing. Today, for now, just tell me 3-1 me how many. Just go down, check the garage. How many explorers are out? And if there are none, at least one now out, then take out one for today. Okay. So, मुझे balance करना today होता है. in If there is any. ठीक If है, there is any in the FT afternoon already shift and he there wants to was take out no- SUV, then I need to. Then वो उसको चलानी है ना उसको फिर उसको नहीं भी नहीं नहीं देखना अभी उसका तो भी। होगा मैं अब तब बोल रहा हूँ जब कोई ऑफिसर नहीं होता जो निकाल सकता है तब Yes, you ask for permission and you take out. No worries. Is there Today- also something similar to like the SRU? So if like there are 3 interceptors and all 3 of them are taken out, and there's a Jason 4th Fernandez SRU posted 20. member on duty, can he take out charges? Bugger shot. जे तब तक मैं एमडीटी कंप्लीट कर लूंगा ठीक है He can, but if there are Depends on situation and if command. there are officers, who can provide the charger, like जिसको allotted है, if they are ready to join, then they can join because we cannot. You want me to refuse them stay or join, should right? I leave, Jake? Because they are allotted charges No, for some stay. reason. Okay, no worries. Okay. By the way, Jake, huh? You do Yep. through the senior officers. Which are, Yes. There is no like in any time there is no officers who are allotted for charges. So I allow some officers to take out charges. Because
we need to catch up with the criminal. That's more than it is like. Yeah, It's not just say about I'm like allowed for chargers at yeah. any time when there is S plus 37A. Even if Jake, without next time don't do 311 because the information Can goes anyone repeatedly in to mid of yours. the unit respond to the So 37 and do one 32 thing: GB? assign them under yourself. Okay, or tell them to assign Jason, sir, can you please come themselves to under 19? you, and whoever is assigned under you to come in meeting room. Do not mention anything like raid or something because the raid is something which should be like confidential. Yeah, no, sure, got it. That is okay. See ya. Take care. Bye bye. इसको धरना है क्या? नहीं रेड मारनी है फिर भी मतलब चार गराज बंदे रेड मारेंगे. नहीं आएंगे और आएंगे. मार सकते हैं, क्यों नहीं मार सकते? कोई तेरे ट्रायल्स कब खुल रहे हैं? अभी तो 2 और काम हुए ना. वो शॉन पिरारिया सिटी में है भाई, उसको कॉल करके बुला लेता हूँ पेटी. I don't think I have seen him. जब से वारंट आया है. बेल तो जा रही है. 7-4 to dispatch. I need officers to go on code 1. Also use the GoPixel and find a partner. Do not go solo. 10-4, I will advise them they're still on MRPD. गणेश शेगर इसी के And घर पे can मारने someone आया. respond to that 911 by गराज Ganesh पे. Shagar? ये नीचे खड़ा है तो. ओए जेक, तेरे ट्रायल्स कब खुल रहे हैं? क्या? 2 तो गए ना, और कम हुआ ना. जेक एक बात बोलो, एक बात कौन दो 3276 चला देखो, 3276 के एविडेंसेस देखो. कैन वी डू समथिंग टू दिस? महेंद्र सिंह का व्हीकल वाज, ये व्हीकल 2 बार हमको आज सुबह मैं खुद था उसमें. एक पहली बार मेरे को कांचा उस सिचुएशन में वेनिलियन को मैं दिखा एंड मैं कांचा को देखा डाउन होते हुए, बट उसका एविडेंस मेरे पास नहीं है बिकॉज़ आई वाज ओनली ऑफिसर. हाँ इसकी गाड़ी फिर इंपाउंड तो करती है इतनी. इंपाउंड बार करके कुछ कर सकते हैं. To captain's office for a second. अरे उस पे स्ट्राइक. या विल Actually, just the first floor lobby, please. स्ट्राइक्स डाल दो गाड़ी में और विल नीड अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स टू एक्चुअली मेक अ अरेस्ट वारंट टू दिस गाय. महेंद्र सिंह का कुछ नहीं कर सकते हैं. नहीं अभी नहीं. मेवरिक कैसा गया तुम्हारा? I need 3 more officers in the meeting ASAP. 10-4, I'm here. मेवरिक कैसा गया तुम्हारा? क्या गया? टेस्ट. I need food. Huh? Do you have any side? No, anything, nothing. Okay, I ordered like 10 mutton meals Demoted. on the way. Oh, jeez, okay. Congratulations, I'm on the same page. Yes, what up? भाई कहाँ हैं ऑफिसर्स भाई? Yeah, you still need 2 more, right? I was भाई having a word with the ये officer. वारंट जितनी जल्दी रेड खत्म करते हो नहीं जल्दी करना होता है भाई. इतना टाइम कितना करना होता है? डन टू सर को बुलाओ. डन टू सर. खांडू सर भी ऑन ड्यूटी. अरे स्टीव तू डिमोट हो गया? हेलो या ब्रो. प्रमोशन का वेट कर रहा था, डिमोट हो गया. डिमोट हो गया? एफटीओ से हटा दिया. एफटीओ से क्या ऐसा क्या कर दिया भाई जी? हक दिया मैंने कुछ नहीं. Fair enough now, right? We are what 8? Yeah, we're 8. Alright guys, we're going on a garage raid, right? We're gonna be raiding multiple garages of a guy named Sean. Is any officer doing code 1 right now? A guy now? named Ganesh Shagar. His what do you call it? State ID is 9017. वो अभी उसका 999 आया था कुछ तो भी. गणेश शेखर का हाँ पता है. हाँ. क्या कहता? अरेस्ट वारंट नहीं है, बस रेड वारंट. कह रहे हैं कि लैपटॉप नहीं मिला जिसने जेल करा था, ऐसा कुछ करके. रुको, ये किस गाड़ी में घूम रहा है उसको? भाई वो लैपटॉप का बहुत चक्कर है गाइस. एक और चीज यार मीटिंग में अनाउंस करनी चाहिए. और जब किसी को प्रोसेस करो उसका लैपटॉप है ना, उसका लैपटॉप लेके रख लिया करो ताकि वापस से ना आ जाए. क्योंकि ये ना ऐश उधर भी बता दे क्योंकि सब मीटिंग में नहीं थे तो वहां एक बात बोलो, मेरे साथ भी हो चुका है. सीज करने से वापस नहीं मिलता है. नहीं मैं वही बता रहा हूँ, कुछ चक्कर है. आई डोंट नो व्हाई. हाँ आई डोंट नो व्हाई नहीं मिल रहा. किसी लाइक क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती. एक बंदे का नया लैपटॉप तो वो भी नहीं मिला और पुराना भी नहीं मिला. एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इज, बट मेक श्योर कि लैपटॉप जरूर उसको रख लेना. उसको बता देना क्यों रखा हुआ है, ठीक है, अलग से.
एंड उसको बोल देना कि वापस आके ले ले, जस्ट उसी केस फाइल में डाल देना एविडेंस लॉकर, जब लेने आएगा तो उसको पकड़ा देना, ठीक है? बुया का Because वहाँ पिन से वापस हो आना भाई, और हमारे भूल गया। GTA वाले चार्जेस में मोस्टली लैपटॉप नहीं मिलता उनको, पता है? नहीं उससे लेकिन कोई रिलेशन नहीं है ना, क्योंकि जेल टाइम तो लाइक सबका वैसे ही होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब भी GTA का चार्ज लगाया समझ तभी बंदा बोला है कि नहीं और मिला जेक मेरे सर को। एक और छोटा सा डाउट था। नहीं मेरे तो बहुत अलग तरीके से। एक वो है वारंट है शाहरुख पर वो 15 दिन हो चुके हैं, लाइक उस दिन करा था डिस्कस, तो वो लोग कह रहे थे कि जाएंगे, बट फिर वो सिटी में पॉकेट शाहरुख पे वारंट है दोबारा? हाँ कौन सा वारंट है बताओ मुझे, मेल मेरे को तो नहीं दिख रहा। 288 शाहरुख पे तो रेड मार के उसके 3 हेलो गाड़ियां वाइबा, मैंने वेलकम टू द कर दी स्ट्रीम। थी स्क्रैप, विन स्क्रैप। वो तो पहले वाला था, उसके बाद भी एक और हुआ था। हाँ वो पहले वाला तो सीधी, वो तो सेनेट ने बोला था कि भाई रेड मारो उसको, वही पकड़ा कर हमारे देखो। मार्क्स। 288 तो उमर डाला है। नहीं अभी तो इसको 288 इंसिडेंट नंबर। चलते हैं। अच्छा इस पे इंसिडेंट करना था, उस दिन बोला भी था, पर वो उस दिन कुछ इशू हुआ तो फिर गए नहीं। वारंट एक बार देख ले वहाँ पे, अप्रूव्ड वाला दिखा दे उसको। नहीं अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है। मैंने भी, अरे मेरा भी अप्रूव है मेगल रॉड्रिगस का काफी टाइम से, लाइक 2 हफ्ते होने हैं, लेकिन अब तक रेडी नहीं कर पाया उसको, पता नहीं क्यों। मेगल रॉड्रिगस कहाँ मैंने पूरा लाइक सब कुछ लॉक भी कर दिया था। अरे वो रेसिंग करता पकड़ा गया था विन स्क्रैच जगुलर में। ठीक है, 3 लॉकडाउन भी कर दिया था फिर भी नहीं गए। अरे वही क्या जो अपन ने पकड़ा था वो रेस में। भाई 15-15 दिन निकल जाते हैं यार गुरु। उसकी रिपोर्ट बहुत पुराना इंसिडेंट है। हाँ अरे वैसे एग्जैक्टली जेक वही, उसके बैक बाद टू मैंने सार्जेंट। हाँ कौन तू कहाँ सार्जेंट भाई? सीनियर हाँ ऑफिसर। जेक सार्जेंट सीनियर ऑफिसर हूँ मैं। सीनियर ऑफिसर। हैं? हाँ ये कब हुआ? एक हफ्ते रिमोट किया। आज ही डिमोट हुआ भाई है। ये कब हो रहा है? इसे पता क्यों नहीं चलता, मुझे कब बताइए? दिन में हुआ है। सुनामी से 10 मिनट पहले भाई 4 क्वेश्चन पूछे। अच्छा रॉक सर ने, अच्छा अच्छा ठीक है। तो करना है इस पे, क्या नाम है इसका? सबको करते हैं एक बार मैच, सारे कर ही देते हैं। हाँ भाई शाहरुख पे करते हैं। कंप्लीट करते हैं सारे वारंट कंप्लीट करते हैं, ठीक है? मेरा एक मेगल रॉड्रिगस वाला था, उसके बाद एक और मैंने था, वो दोनों रहते हैं, ठीक है? ऑलराइट लेट्स गो, पहले शाहरुख पे चलते हैं, ठीक है? आओ पहले शाहरुख पे चलना है कि पहले ये शेगर पे चलना है? नहीं गराज। अरे सुनो शेगर ज्यादा एक्टिव है, शेगर पे करते हैं। हाँ शेगर घूम रहा है इधर उधर, वो ज्यादा एक्टिव है, वो फिर किसी क्राइम में कुछ ना कुछ करते रहता है फिर। हाँ ओके इससे पहले और ज्यादा क्राइम कमिट करे, वी हैव टू स्टॉप हिम। बोल दो कोई शायद पे फिर बाद में बोलेंगे। भाई खाना दो पहले भाई, मैं मेरा अपने अंदर असाइन कर लो भाई मेरे। I have no idea भाई। अंदर भाई मैं खुद जाके ले लूंगा। अंदर आ जाओ भाई अंदर। हाँ नीचे आओ, सबको मैं अपने अंडर असाइन कर दूँ। Hey यार। हाँ भाई राजुंदर। अच्छा मतलब ये सुबह से हो रहा है कि सरप्राइज? We can come in the same uniform, right? हाँ तुम तो सेम यूनिफॉर्म में आओ। नहीं मैं उसमें जाऊंगा। स्नेक आइस चैनेट, Specific radio check. स्नेक आइस चैनेट बेबी। Alright, everyone who is in the raid come to radio 6. क्या बोल रहा है? बेबी वाले कपड़े पहनने हैं ना, बेबी वाले हैं? 97 dispatch. Only for SWAT units. Snake eyes channel. करेंगे वहां जाने ये क्या गोली से ये है? अबे करेंगे भाई, तू आरपी कर ले राजा, तू आरपी कर ले हैं, तो याद है। And everyone come to the lower parking. Frequencies expire guys. कोई साइड दो मुझे भाई, मेरा काम हो जाएगा नहीं तो आज। कोई साइड है? Inside, no. तेरे को आरपी करना है तो पीसी है तो जा भाई, लिंक दूंगा, जा जॉइन कर वो वाला सर्वर। एड्रेनलिन रश मिलेगा तुम्हें। कौन सा गाड़ी निकालना है? आई डोंट नो, लाइक एक एक्सप्लोरर और एक चार्जर। और वो सब का नहीं है ऑफ कोर्स। निकालो एक्सप्लोरर में। ये देखने ये कौन है? हु इज दैट? एक्सप्लोरर कौन निकाल रहा है? Who's gonna drive the charger though? मैं चला लूंगा। Only the authorized people. Authorized? Only the authorized. No worry, it's not a chase fit, just go there. You can drive. Okay then just don't fuck it up, alright? एक्सप्लोरर मैं निकालूं फिर? Actually I think सब में से सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ कि ये भी डिमोट क्या? चले गट द एक्सप्लोरर। जैक, चले गट द एक्सप्लोरर। Yeah, get the explorer, get this.
भाई अबे सुनो, S प्लस में मत चलाना चार्जर, ब्रेक नहीं होती इसमें, ठीक है? A प्लस पे Yeah, just use A. का फर्क नहीं आता। 10 to हाँ मार्क एक्चुअली स्पॉट ट्रक वैसे ही CQs में चलती है भाई, बड़ी बात है। भाई बेनी क्या रिपेयर करता है भाई इसको भी जो है ना? अरे राना सर निकाल लिया उसने पैसे। टायर वाले बात कर। भाई भी कोटा हो जाना पड़ेगा। Alright, you wanna be moving to the courthouse? 10 4. हाँ मेरे एक्स थोड़ा संभाल लेते, मैं भी आके बैठ जाता। मतलब रुक जाते। रुक जा। ओरी हेलो, why do you want to ब्लैक फ्लैग make मार the रहा vehicle था। dance? क्या चल रहा है भाई? I don't I hold don't know how it. that happened, but that was sick. हैं? सब लोग जा रहे हैं, पैकअप हो गए सब? Wait, listen up. Listen, Jake is कितने लोग gonna हैं assign आपको? everyone to him, ठीक है? Yeah. तब तक एक बंदा 3-1 करके डालो कि 8 units are gonna be on frequency 6 SWAT rate। 8 हो ना तुम लोग, तो मैं जा इतना रहा डाल दो बस। हाँ नहीं पर श्योर नहीं है, जिसको असाइन करने तुमको भी देखने दो कितने होने चाहिए, लेकिन ठीक है 2 मैं 2 वो 2 ये 6 बाकी का हर गाड़ी में 2 है राइट? इसमें कितने? नहीं इसमें 3 है ब्रो। 3 है। जिस पे 3 है। Alright, everyone assign yourself under me. एक बंदा कम है तो Hello Ishu, welcome to the stream. Listen, everyone assign yourself to him. 3 क्या नाम है? 3 2 1 हां। साइन कर लो, फिर मुझे बताओ हाँ, जगह है या नहीं है, मेरे को ऐड कर दो फिर। बैठ इसी पे निकाल के लाता हूँ। अबे क्रेडिट तुम्हारा क्या नेम है? ना 4 गाड़ी नहीं चाहिए। 4 नहीं चाहिए तो चलो इसी में चलता हूँ। इसमें बैठना, चार्जर में बैठो। रुको, तुम दोनों का क्या नेम है? ओ भाई साहब, अरे एंड सेज इसी बोलने वाला था। हो गए ना? अरे 3 चार्जर में 3 एक्सप्लोरर में 2 ओपन। Alright, we move to the courthouse. स्वैट कहाँ जा रही है? स्वैट जा रही है रेड पे, उनको हम फॉलो कर रहे हैं आज। कुछ नया भाई है, S प्लस है, A प्लस। ब्लैक बेल्ट अच्छा है, रख ले। मेरा स्नीकर्स है। मेव का वैल्करी है, कैश का क्लच आई थिंक, स्ट्रोक पकड़ और हार्डी का होंडा है। रेनबो 6 खेल लेते हैं ना। अरे चलो मूव करो। भाई बहुत दिन हो गए खेती यार। स्वैट जा रही है पिटने। हां अच्छा मैं ड्राइव कर रहा हूं क्या? डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला। भाई मैं वही सोच रहा था। गाड़ी वाला मैं ड्राइव कर रहा हूं क्या? ठीक है भाई, होता है रेक्स, होता है। देखो मुझे शेड्यूल अगर तो माइकल शूमेकर द एक्सपीरियंस, मतलब पता है ना, अभी तो बहुत लोग हैं पुराना वाला, उसको भी लेके आ गया ना, पीडी में गाड़ी में बिठा दे, आगे वो ड्राइविंग में। तो पीडी मतलब हगास है, समझ रहे हो रेक्स? बिल्कुल स्ट्रेस हो रखा है, जॉइंट के लिए फोन करना पड़ेगा। हेलो, गनशॉट किधर हो रही है? फाइट चल रहा है, पैसेज मिला फॉर डेविस। क्रूज स्ट्रीट। चार्जर शेड्यूल कोर्टहाउस। बोलो तो कब करोगे पीसी टू यू? झलक फिर लग रहा है एक्सप्लोरर का हैंडलिंग क्या चल रहा है आजकल, मैकेनिक क्या कर रहे हैं भाई एक्सप्लोरर के साथ रात वैसे बोल रहा हूं। रूसी मन होता है इधर ही ठोक दूं। मंडी बॉय भाई मैं और एरन आज कोई चेज में थे, पीछे एक रेड कलर गाड़ी आते, बोलता है इसको ठोक घंटा क्यों ठोको? गाड़ी लॉक करो सर, अपनी पहले गाड़ी लॉक कर दो प्लीज। लॉक है भाई। यस वी आर राइट ओवर हियर, डोंट वरी। SASPR। ओए रेक्स। हां Why the hell are you driving like a Bundy boys and the Babes? सुन अरे सारे टीम सब लोग का परमिशन हट रहा है ना इसलिए। हाँ सुनो आज हम हाईवे पे थे, एक नॉर्मल A प्लस की गाड़ी में, शायद एरन था, स्टीव था, याद नहीं आ रहा। पीछे एक रेड कलर की सुगोई आती है या फिर जगलर आती है, नहीं पता। भाई इसको ठोक भाई क्यों ठोके, क्या कर दिया भाई? जो गाड़ी भगाए ना वहां से होगी। FTO सेट आ गई 2 दिन के लिए। FTO सेट आ गई गैराज का है नहीं तो अब वापस क्यों है? हां अबे कुछ पूछे ही नहीं, एक केस लो पूछो कुछ। मूव सेक्शन दिया है।
Alright. मस्त चलता है क्या हुआ? क्या हुआ? इसको जेसन Are you only moving towards the what do you call it, the fire station near the first lane? फर्स्ट लेन पोजीशन Actually, no, we're going to the first lane, right? रेक्स, बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है मेरे को अंदर से फर्स्ट लेन सुनते ही। अच्छा अच्छा Guys, बिल्कुल remember you मेरे को can भी मेरे go को to भी saw navy intersection. Just flex your arm muscle for the siren light. वहीं पे सारे 37 सेल्स होते हैं भाई सब चला पता नहीं सारे क्रिमिनल भरे पड़े अच्छी है ना? उस पे से मारा बुनता वाले भाई सुना है कोई कहीं है ही मारा? नहीं यहाँ तो दिखते ही नहीं है अच्छा, क्यों फट गई क्या उनका मारा बुनता वाला की एमजी की पटी है क्या? पता नहीं कल तो बहुत पीट दिया है जिसको भी दूं क्या पीट अबे अपनी फीलिंग पे थोड़ा काबू रखो। उड़ जाएगा फ्लाईओवर के ऊपर से उड़ जाएगा। ठोकने की बहुत ख्वाहिश है ना? ऊपर जाना है। अरे कोई नहीं पहुंच जाएंगे तो कोई नहीं आगे से जाना चाहिए। देख आगे से राइट ले भाई, आगे से राइट ले, राइट लेके हो गया। नहीं नहीं सामने से चले जाएंगे अरे नहीं नहीं इधर से ऐसे जाके घूम के जाना पड़ेगा समझ रहे इधर से सीधा जाएंगे सीधा जाके फिर राइट ले लेंगे अरे भाई हटना भाई हो रे बेचारा लोकल का बेहोश Hello, कर दिया। 76. ड्राइवर का है। हाँ, टूरर easy। में भाई भाई ऑफ रोड व्हीकल क्यों यूज करते हैं हम? गया घुस गया। नहीं नहीं हेलो क्या नहीं है, घुस गया तो घुस गया। राइट में घुसा दे। मेरे लिए नहीं घुसा ना टच भी नहीं हुई मेरे ना इधर ही लिए रखो तुम। कॉपी ओह माय गॉड आराम से Are you gonna set up the? यार 37 कॉल्स पे बहुत आते हैं हाँ अभी झाड़ी में से एक बाइक निकाल के बंदा निकला यहाँ से। जस्ट देखा मैंने भी। ये है क्या? प्रॉपर्टी एक बार प्रॉपर्टी चेक कर देना। वे गलत प्रॉपर्टी की गैरेज में हाथ मत डाल दो। Yep. This is the one. Yep. जेट जा जाएगा, सेनेट आ जाएगा, सब आ जाएंगे पीछे। ये है ना? हाँ रुको। गैराज कहाँ है इसका? गैराज कहाँ है? यहीं पर है। कहाँ पर है? क्या स्टेट आईडी क्या है? इधर होगा 901 मैं डाल। गाड़ी थोड़ी पीछे करो गैस अपनी। तुम्हारी गाड़ी। हाँ इधर है इधर है। Lock vehicles कर दिया पीछे करो। गाड़ियाँ हटाओ सर। सड़क पिरामिड गैस कम unlethals out, ठीक है? There's only one car. क्या किसका वो क्या है? और लाइसेंस प्लेट? Unknown नाम unknown है। लाइसेंस plate is P8Z3E49I. Yeah, that's his registered vehicle. Vehicle unavailable. इसे मेंटेनेंस से भरी। Maintenance. है कौन सी वो वही निकाल रजिस्टर्ड है ना लेकिन ये तो कोई मतलब रजिस्टर्ड है। हाँ तो फिर ये भी स्क्रैच और यहाँ पर एक ही गाड़ी यहाँ पर नहीं है इसकी गाड़ी और कोई अनसक्सेसफुल रेड कोई ना गाइस मूव आउट कम आउट कैसे हटाना है इसको? अनसक्सेसफुल भाई पिकअप I was going towards the apartments now to raid Shahrukh's apartment, right? aren't we going city hall? सी गैराज रेड नहीं है भाई मैंडम में पीढ़ी घुस रही है भाई। राणा को पता है सब कुछ। राणा गॉड विजुअल्स। Run to Maverick direct. Are we going to City Hall? Negative. Move towards it. And then move to? I'm saying move to the apartments. 10 for. अभी किसका है? यही है गणेश का है या किसी और का? हाँ इसी का होगा शाहरुख का भी करना ही है तो अपार्टमेंट्स में तो सबकी पार्किंग है तो फिर उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे?
अरे तो like everyone has a different apartment number, right? तो उस नंबर के अंदर they have parked their vehicles. We also have an apartment there. हाँ है, दिख रही है। हाँ तो उसके अंदर ही एक like बात you have बोलो, a ये garage पीडीएम allotted. हाँ पीडीएम वाला का वैसे भी बिजनेस नहीं है, बूस्टिंग बूस्टिंग में सब लोग गाड़ी ले रहे हैं, तो हमको कुछ लोन वोन में गाड़ी देते हैं क्या ये लोग? अरे पीडीएम का सीईओ खुद विन में घूमता है. वो तो विन में घूमता है, मैं पूछ रहा हूँ Alright, हम तो गाड़ी ले Explorer, stay on the main street. Charger, go around from the parking. चिंते एकदम I mean, बोला था. follow us. हमको एक्सप्लोरर मेन स्ट्रीट पे रहने बोला उसने। Explorer, go around and go from the front of the apartment instead. हम लोग यहाँ पर बंडी बॉयज. मैं सही साइड से हूँ, वो गलत साइड से. नॉट माय फॉल्ट. ना मस्त अच्छा खासा पिट मारना था। Set up perimeter, set up barriers. I need 2 officers on each perimeter and 2 officers with us, alright? बैट क्वार्टर है क्या? नहीं. 2 officers come with us and other 4 officers surround perimeters on each side, नहीं right? होता, बता रहा हूँ. लास्ट टाइम. अरे वो Steve और एक और आ थक गया हूँ. जाओ बता क्या मैं जाऊँ क्या इधर की नहीं बाद नहीं में नहीं नहीं बाद में थोड़ा देर. पार्किंग अरे अरे मना कर रहा हूँ घुस. अरे अरे माय बैड बबल मैं दिखाऊं बबल. बबल चलो सर मिलते हैं. बाय बाय. सर हमारे गन पे बबल होती है, दिखा है क्या? सीरियसली? देखो मुझे गाड़ी निकालनी है, मुझे वहाँ पूरा घूम के जाना पड़ेगा. बताओ तो घूम के जाना भाई ही कितनी पड़ेगा. मेहनत हो जाती है यार, कितनी यार, मेहनत हो लाओ, जाती है. पेट्रोल का रेट देखे आपने कितने हैं? नहीं आपको क्या, आपको तो फ्री में मिलता है, हमें थोड़ा ना मिलता है फ्री में. हाँ आपको तो फ्री में मिलता है. ऑफिसर ऐसा मत करो यार. तुम खरीद के देते हो हमको गाड़ियाँ फ्री में? किसने बोला? क्या मिलता है हमें फ्री में? गाड़ी फ्री में मिलती है हमें. ओ ले पेट्रोल फ्री में मिलता है. कौन देता है फ्री में? इसको मिल रहा है पेट्रोल फ्री में. अरे वो कौन है भाई? एलियन मैं इसकी पहली बार देखा. एलियन ज्यादा यार गलत बात है लेकिन. अच्छा सर एक चीज बता सर, वो कह रहा है वैसे वो कह रहा है जस्ट आस्किंग. मास्क उतारो पहले तो अपना. एक सेकंड. नेगेटिव. हेलो बताओ. मैं कह रहा था सर पीडी में कोई सर ट्रेनिंग चाहिए थी सर मेरे को. हाँ क्या चाहिए पीडी में? मेरे को ना वो ट्रेनिंग गन लाइसेंस के लिए क्या मिला देख रहे हैं? ट्रेनिंग पता करनी है. जाइए वहाँ पे 911 कॉल करिए. आई एम हियर फॉर द वेपन ट्रेनिंग. कोई भी वी विल रेस्ट देयर. कॉल भी डाल नॉट रेस्ट इन पीस बाय द वे. जब भी होगा तो कर. अच्छा रुक जा. Yes, now we're going to smoke 3 road 3. हाँ सर क्या हो रहा है? बस एक चीज पूछ सकते हैं क्या वैसे? रिमूव करो बेटा, रिमूव. नहीं हो क्या रहा है वैसे? जस्ट आस्किंग. अरे यार थोड़ा यार थोड़ी तो इन्फो होनी चाहिए ना. हमारा राइट टू इन्फो तो है ना यार. ये भी मतलब क्या दिक्कत है? It's all over at Sandy. Let me check on the info. कल भी मोटू सैंडी ना हो. No, hold. We'll be going to Cougar Avenue 13, apartment 5. Yep, Cougar Avenue 13, apartment 5. Everyone, yeah, remove your barriers, get in the vehicles, get ready. Oh, we'll have to wait for Ash. He had 0 is coming back right here. Next stop Sandy, right? Next, Cougar Avenue 13, apartment 5. Cougar Avenue किधर होता? खोजो. खोज रही हूँ.
लिखा है लेकिन मिल नहीं रहा है। आउटसाइड में है वो क्या? इधर अगर साउथ साइड नहीं Join तो PD meeting, guys. Guys, join PD meeting. Huh? कौन सा पीडी मीटिंग? और आई मीन मेल पे है? Yes, 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 yes. Yes. Let's move a bit ahead. वो जरा गाड़ी का रेडियो बंद कर देते तो डी हे कर रहे हो। मार काटा कोगरे मैंने मार करूंगा। मिल गया मेरे को। तेरा अरे ये ग्रीन बाइक थी ना उधर? एक्स बसा तू can I help you? Okay. Here in the PD meeting, you can also join Rana. Is anybody here who doesn't know Hindi? Yes. I guess Levi and Yep, Levi. Okay. Yes, sir. Okay, so I'll keep it in म्यूट English. करना है क्या स्ट्रीम को? नहीं चलने दो. Stream should be नहीं. there. Stream should be there. It's okay. Stream is not a very big any issue. Even I am streaming for reference purposes. So the first thing which I've been noticing on my own without any third party feedback is that police is directly what you say seeing somebody handing over something to somebody and going directly, moving in directly and cuffing them up directly. And now here's the thing: if you see that action of what you say selling weed, right? Everybody knows here that emote the character does of selling weed. The emote is that way that the character is hiding that product and he's giving it discreetly, right? That is correct. Yahan tak everybody is with me. Yes. Yeah. Till here everybody is with me, right? So he's handing it over discreetly. So we are not supposed to know that he's handing out weed. But according to our character progression, we know one thing, that whatever suspicion call activities are, most of them are only the drug sales. That character progression is there. I'm not hampering that character progression. What I'm saying is that instead of looking at somebody, clicking their photos, you do that. You keep on doing that. You are waiting for somebody to hand over some product. Keep on doing that. Don't directly go and start cuffing them, gun pointing them, and that put your hands up. I saw you handing over something. We got a suspicious call, and you cuff them up and you get them to sniff and you get them to search. That's it. That is not correct. Perimeter.
let me be very straight and very strict over here. That is not correct at all according to coprp. Many people over here would understand that it is not at all correct. So what you have to do is that I'll tell you. Hello. Yeah, what jungle? Yeah. Should I mute my stream or can I? No. It's fine. It's Yeah. fine. It's fine. Yeah. What happened? पार्किंग सर I बाहर ही just होगी ना listened. It's sort of a training for a particular situation. Okay? Yep, yep. garage नहीं हम Sort of a, what do you say, back and forth feedback training. Mhm. ये शाहरुख का Right? ही So now Maverick check anybody here specify, especially the non-command, the senior officer, deputy, senior deputy. I want to know anyone. Please tell me how you would respond to the drug call. I want to know. Anyone? Shall I? नहीं राणा सर, आप नहीं, आप सर एक्सपीरियंस्ड हैं. मेरे को कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कॉपरपी का. Make it Phoenix Fernandez, उसको वो पता है यहाँ पर वो. Anyone who doesn't have much experience of copper. vehicles here. बेबी गुप्ता बताना जरा. One is Sultan Mark 3. ड्रग सेल पे ना. और you only respond to the chases. नहीं ड्रग सेल पे देखो जाते हैं सबसे पहले तो अगर वहाँ पर दूर से सिचुएशन देखते वही जो बताया जो बेसिक सब लोग फॉलो कर रहे थे तो वही एविडेंस कलेक्ट करते हैं. फिर अगर हमें लगता है कि कोई बेच रहा है और वहाँ पर भी सस्पिशन एक्टिविटी आ रही है और कोई दिखता है तो उसकी सबसे पहले फोटो खींचते ताकि कुछ रहे दिखाने के लिए. ठीक है, उसके बाद उसको पुल ओवर करते या वो भागने की कोशिश करता है या फिर जाता है कहीं तो उसको रोकते हैं, फिर उससे बात करते हैं. ठीक है, ये गाड़ी किसकी है या जिससे ड्रग निकाल लेते हैं या फिर क्या कर रहे थे. तो उसके बाद हम लोग प्रोबेबल कॉज नहीं तो रीजनेबल सस्पिशन पे फ्रिस्क करते हैं. सिर्फ अगर बल्ज मिलता है तो आगे करते हैं सर्च वगैरह. फ्रिस्क का मतलब क्या है? बल्ज का मतलब क्या है? टटोला मतलब जेबे उसकी. सॉरी टू इंटरप्ट. Tell me state ID again. हाँ अलाउड है, मैंने लिखा हुआ स्ट्रीमिंग इज अलाउड. तो मेरे को एक बात बता. टेल मी वन थिंग. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिस्क? जेबे टटोलना मतलब जैसे हाथ रखना ऊपर जैसे ऊपर से. So you found a bulge on somebody, right? हाँ. You get a message like your character touched the other character, it frisked it and it found a bulge. Does that mean that he has something illegal? मतलब he has something illegal or he has something to not illegal. I mean कुछ उसके पास ऐसा है जो मेटल का है या पोक कर सकता है या फिर इलीगल जरूरी नहीं है क्योंकि नाइफ भी हो सकता है उसके पास. So how can you confirm that it's a drug? वो तो वैसा क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन पड़ी नहीं क्योंकि हमेशा बंदे भाग ही जाते हैं मेरे सामने तो उसका आइडिया नहीं है. मैं जब तक पहुंचो बंदों पे तो वो भागने शुरू कर देते तो वो अपने आप ही सस्पिशन में आ जाता है. Or we found one. You haven't had any. Okay. वेट कर जाते हैं. Who is this? I'm climbing up and keeping an eye. Coco. Tell me now, like how you deal with the drug call. Coco, are you there? You want me to tell you how I do it? Because I'm kind of... Yeah, leave it. First, I take pictures, a lot of pictures. I post them in markshot evidence. And then before I even make a move, I call 77s. I make sure I call someone who's experienced. And then what I go is we approach the person and I actually start questioning him first. Because then is a lot of the times with these 37 calls, they actually set up good RP scenarios where I let them go. So they're handing out some milkshakes, they're doing charity work, they're doing this and that. And if if they give me the items, well, I don't check them, I don't frisk them yet because if their story matches, they have a good story, they're good to go. Like I haven't actually seen what they're given, and so I don't actually have any probable cause to detain to arrest them or anything. So I just go with that. If it turns into a 1080, yes, let dispatcher be turned into a 1080. And if it doesn't, and I know for sure he's selling drugs and his story doesn't match, I honestly just try to corner him. I check his vehicle. Is it? Are we moving out? Yeah, info. Wait, I'm coming. Otherwise on the. Oh, hold on. Actually, let's wait for Steve to hotwire the way. But if any stop requests a K9 unit, but the thing is. I never actually instantly jump the gun and frisk them. I just first you want to make sure you know who they are and get their identity. Because half the time whenever they see a cop car, they just try to run away. Let's move on. So if you go and just talk to them first, that's what I do. I try to simmer down before we escalate the situation, turn into a shootout. Just try to figure out maybe they're trying to actually create a cool RP scenario, maybe because at the end of the day it's an RP server.
It's not W chasing. You want to make sure they're not selling drugs. That's true. You want to stop them from selling drugs. But if their story is good enough, honestly, you just gotta take the L and let it go. That's what I do. And if they are selling drugs, then I ask them kindly, hey, can I search your vehicle? Let's say if I am selling drugs, right? Yeah. And Accent क्यों मार? Sorry. No, ignore me. Yeah, you respond to me and you check my ID and everything. I give some excuse, very good excuse, and you leave. Second time you get the same area, same suspicious call. What do you do with me? I'm gonna come back. I'm gonna dispatch no. I'm gonna request 77s, and then we're gonna, I'm gonna come over, talk to you, and I'm gonna actually maybe ask you inquire more details. And if not, if the story it doesn't start matching up, then I'm gonna request to I'm gonna actually request to further inspect you. Maybe request a K9 unit. I just want to make sure that you're not selling any drugs. So we'll do it the professional way. Request a K9 unit. If there's no K9 units available, 37A. honestly, I don't want to go as far as to like frisk it and search it because I don't really have any. I don't have any. Yes, there's suspicious calls, but there's you gotta keep it realistic. There's a lot of civilians in the area. Yes, you've been there twice, but realistically, we want everyone to have K9 units. Not everyone, but there'll always be a K9. So I'd request a K9 unit, and then the K9 unit comes, and if it senses something, then I'm gonna ask permission to actually, I'm gonna ask you why. Well, first of all, I'm gonna question you about why the K9 is. Smelling something, and then I'm gonna ask permission to search the vehicle and search you. How long you been doing coprp? Couple weeks. Never done coprp before? No. This guy knows more. This guy knows more than the people over here. That is exactly okay. So have we read the? Oh yeah, we have. Here's the thing. From now on, I'm setting up some thumb rules. Thumb rules means some in RP on situation rules. These are not like hard and fast rules. First of all, you have a K9. So I'm gonna go through it ABCD, right? Go through basic scratch. Join my stream. Okay. Actually, wait. Let's go back. For the K9 handlers. Go ahead. I'm just gonna go back to apartment real quick to see one thing. Especially. Now, the basic scratch of coprp, every single situation is based upon two things: reasonable suspicion and probable cause. This might sound like a lecture, and I didn't want to do it, but I'm forced to do it. PD, right? Yeah, hold on. Because I've been seeing a lot of fuck-ups happening. So, reasonable suspicion is when the same example, the drug call example, you get a drug call. You go to an area and you see somebody, spot somebody stuff and all that, talking to people, right? And he is like, you start questioning them, you start taking an positive ID check on them, and that's it. You ask them, what are you doing there, blah, 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 and all that things. That's it. You cannot detain somebody under reasonable suspicion. Remember that, everyone. You just cannot. You cannot frisk them, search them, or anything, right? And the next thing comes, let's say that person is, what do you say? After questioning, you use your communication skills on them. As a coprp player, you should have very good communication skills, according to my perspective. You start using your communication skills if he's like making shitty excuses which are not matching up, which are not there, which doesn't make sense at the end of the day, right? So that turns into a probable cause. Now there is a second thumb rule which we all should follow, and you all will follow, is that person is continuously second time or third time seen in that same area handing out stuff. Then it becomes a probable cause, and then you can detain the person, frisk them up, search them up, but that should be the last thing to do. That should not be the first thing to do. Now people are doing that. Like the first thing they are doing is that directly going, then pointing, cuffing, that's it, boom, the end. You don't know what he is handing over. He's hiding it. The character is hiding it. Remember that from next time. It is not always drugs. Maybe he's handing out some other stuff. Maybe he's making an RP out of it.
Now server mechanics says that with that emote only drugs can be handed over, but that is like OC information. That is metagaming. Okay, so now comes the K9 handlers thing. Now what happens is, let's say this is a drug call area. Now we have an option to use the K9. So we look around. What you have to do, you have to go to the area, look around. If you don't see anybody, you take out your K9 and you tell them to track. Now there is a confusion among this regarding this, right? The first and biggest confusion regarding the track option of K9s is that people believe that the track option is that K9 goes directly to the drug seller. It's not that. K9 goes to the person. It is going to the drug seller, that is server mechanics, but you don't have to consider that. You have to consider that it is going to a separate person, a different person. You don't have to directly go and tell them, okay sir, my K9 I told him to track, and it directly came Hans, to you. Yeah, what? Just a thing, there are two specific things when you go to your K9 now. So suppose पहला होता है कि just to track a person and different just to sniff someone around. So there are two different things. So अगर कोई sniff वाला directly कर रहा है, then yeah they are misusing the K9. But they can use normal वो कर सकते हैं कि yeah just find a person who is around. तो वो चीज़ है, वो ध्यान, वो इनको समझना होना चाहिए. वही बोल रहा हूँ ना. The K9 is not tracking for somebody who is selling drugs. The K9 is tracking for the people around in the area. That's it. It is doing that only, nothing else. Okay, that you have to remember. Now you have come up to an area, you have seen nobody is there, you told somebody that there is somebody, you told the K9 to track and it found somebody, and somebody is standing there. Okay, so what you have to do, you don't have to go and directly say that, okay sir, my K9 tracked you and you have drugs. No, you have to talk to them simply. What are you doing here? What's your name? If they are wearing a mask, tell them to remove their mask. Okay, look for signs. Let's say the person refuses to show his identity, but you have the proper right to check their identity. Remember that, because he's coming under reasonable suspicion. But if he's like acting sus, which means he's not removing mask, he's not showing his identity, ask him why. And if it doesn't have a very good reason means a very creative RP reason, it will convert into from reasonable suspicion to probable cause immediately. Okay, so the next thing is that, let's say the person complies, he's like acting and telling you, okay, I'm doing this and that, blah blah blah. You can directly tell them, okay sir, I've been getting a lot of suspicious calls from here, like it would be very good if you clear out the area. Hans, I'm really sorry to cut you in between. I think can you just repeat it again? Now you made me confused for some of the things. So can you repeat the K9 procedures? I'll repeat that. You have to reach somewhere at the reasonable suspicion call. Point 1. Step 2, you have to check that if there is somebody, you see somebody around the area. Step 3, if you don't, you take out your K9, you tell it to track for people. It goes track. Now that step, point number 4. No, Hans, not this one, the starting one. Like the first thing which you were telling about the 37, how cop goes, वो वाला part में कह रहा हूँ. मतलब tracking वाला ना? No, not ignore the K9 part. Before that, if somebody is there, like अगर कोई है and K9 is not there, वो वाला part एक बार मेरे को बता क्या बोल रहा था. For that part is वो तो अभी आया ही नहीं. That part is not even here. I'm covering the K9 part first. Okay, just continue. I'm covering the K9 part first. Okay, you take out your K9, you tell it to track, or you request for K9. Okay, you request for K9, you tell it to track, it tracks for somebody, then you go to that person, you talk to them. If they are found for the first time over there, you check their ID and you look for points. In that, you talk to them, you start questioning them, and you have the full right to do that, by the way. If somebody tells you that no, I refuse to, then it will automatically convert into a probable cause.
Okay, if they fail to comply with that. But remember, you don't have the right to cuff them, search them, or frisk them. Remember that. Okay, under reasonable suspicion, don't directly go. Even if you seen somebody for the first time, you are going there and you saw somebody handing over something, you ask them that what are you handing out, blah blah blah, and everything. You play it smartly. Don't go by the book. Be creative. Play it smartly. That I saw you handing something. What was it? Blah blah blah, and all that. Okay, you start playing smart, and if the person is complying and giving a very good RP, I don't think that you should have a reason to arrest them or do something. If they don't have a very good reason, it's okay. It's first time. Tell them, okay sir, I am warning you that we are getting a lot of complaints from this area. You should clear out. But if I found you here again, like handing out some stuff, then I will have to frisk you and search you up. सर एक डाउट है मेरे को. I'll take the doubts. Wait. Okay, Hans, I have a conflict on this thing with you. If there is no K9, I see a person handing something. Okay, one time is fine. ठीक है? I'm just waiting. I'm just on a rooftop. मेरे को एक बार कॉल आई, मेरे को बंदा नहीं मिला. मैं रूफटॉप पे वेट कर रहा हूँ. वापस सेम ड्रग कॉल आई उसी स्पेसिफिक बंदे से. And now if you are saying not to detain that guy on the basis of I've not come on the second time yet. I'm still on the first time. No, even on the first. No, you are not understanding my point. Still. That is something else. Yeah, so for that I'm saying कि पहली बार मैंने देखा ही नहीं बंदा. I have to cover that point. Yeah. Thank you for reminding me that as well. भूल गया था, I forgot. Okay. Till now everything is clear. Whatever I said till now, because I'm gonna discuss the other point. Yeah, Gautam. सर सो लाइक हम जब भी 37 पे रिस्पॉन्ड करते हैं सो एक ऑफिसर बात करता है एंड बाकी के एविडेंस लेता है. सो जो एविडेंस जब भी ड्रग सेल्स होता है तो उधर लाइक वीड के बैग्स या ऐसा कुछ का फॉरेंसिक होता है वहाँ पर. तो वो एविडेंस यूज करके हम डिटेन या अरेस्ट नहीं कर सकते उसको. फॉरेंसिक्स होता है मतलब क्या होता है? मतलब मैं बताता हूँ. गौतम मैं बताता हूँ. हंस वो हुआ क्या था एक दिन कि आई वेंट टू पलेटो. वहाँ पे एक 37 कॉल था. दैट गाय हैड 89 वीड बैगीज. तो बेसिकली सर्वर मैकेनिक्स पे दिखाता नहीं है कि वीड बैगीज या नहीं, बस उस पर लिखा रहता है यूज टू सेल दिस ऑन द स्ट्रीट्स. अब वो बंदे का आरपी इतना अच्छा था कि वो बोल रहे थे कि ड्राइड स्पिनच है उसके अंदर. ठीक है, तो मैंने अभी के लिए मैंने हार्डी सर को या किसी को तो पूछा था, बोला था कि उसके ऊपर है हम लोग का कि उसके अंदर वीडी होता है तो उसके लिए अभी तुमको सीज करना होगा. तो मैंने बोला कि देखो अभी मैं इसका रिपोर्ट बनाने जाऊंगा फॉरेंसिक्स में, लैब में जाऊंगा तो मुझे वो वीडी ही निकलेगा. तो मैंने सारा सीज किया था. इज दैट करेक्ट? You can take one pack from them. I mean, being a police officer, won't you know the difference between a weed pack? You can smell it out, but that is a very fundamental thing. Forensics में do we have that mechanism, by the way? I don't think so. No. वो बस खाली आरपी के लिए है वो चीज. That is your RP. नहीं, हमने किया नहीं अब तक. अगर हम ट्रैक डाउन करने लगे ना, जितनी गैंग्स है सबको ट्रैक डाउन कर लेंगे एक ही दिन में. कौन क्या बेच रहा है. That's the thing कि अभी के लिए मैंने किसी को वो रिवील नहीं किया. Like how we can track the sellers. Okay. The thing is you get the forensic for that while selling. Okay. Shush. Let's not talk about that. You tell Gautam this point. You clear out with Hardy and Abhishek later on. Okay? Not on streams. Okay? I don't want this on streams. This thing is hidden. Let it be hidden. Okay. Sure. Any other doubt till now? Because this. Okay, I have something to say. For example, somebody is selling something on the street, right? Yeah. So if you look over there from the torch, वहाँ पे drug sale के लिखे रहते हैं, like evidences रहते हैं. So can that be a probable cause? Because that person is directly standing in front of that. Ask the person. That I've been. ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीड पड़ा हुआ है, ये किसका है, ये वो. एंड ही विल से मुझे नहीं मालूम किसका है. ठीक है, यहाँ पे एक बंदा था. ही विल गिव यू एन एक्सक्यूज that there is okay there was somebody over here and he was handing out something as well, so maybe he was selling, but I'm not selling. That is still, by the way, RS. It's not probable cause. Yeah, that is still reasonable suspicion. नहीं, but सर हम बोल रहे थे कि अगर वो बंदा बेचते हुए देखा हम लोग तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं कि कोई और बेच रहा था. But still, it can be anything. You cannot assume. Pre-assume नहीं करना है.
So How did अभी it? वो बेच Okay, रहे what is the proof that it came over here while he was selling? Maybe it was there 1 hour ago. Somebody else was selling. एग्जैक्टली हंस भाई मैं इसका कुछ बोलूं एग्जांपल. Yeah, go on. ओके सो आप देखे वो कुछ ये कर रहा है एक्सचेंज का ही यू हैव सीन समथिंग ओके लेवा इज हियर राइट यू हैव सीन समथिंग लाइक ही इज एक्सचेंजिंग विद द लोकल्स नॉट वंस ट्वाइस थ्राइस ओके यू आर स्टैंडिंग एंड ऑब्जर्विंग एंड यू गॉट ओनली वंस द कॉल ऑफ सस्पिशन एक्टिविटी नाउ you go there you ask and he says no I was giving some chocolates or biscuits but you detain him when you get to the PD when you're getting the evidences of his pocket the pocket is empty no traces of any kind of suspicious substance in his pocket now if he's a very good RP player he will go to the court now tell me how will you prove in the court that he was exchanging weed while if you check the pictures also he's hiding something under his hand and lawyer will argue that we get the got call it for उसमें suspicious अरेस्ट होगा ना उसमें so डायरेक्ट सर्च तो arrest कर ही नहीं सकते he will उसमें get तो arrested डिटेन but होगा on what basis will arrest have you seen what he's exchanging Let's not confuse that. Let's not confuse that. The simple rule is that when you spot somebody for the first time handing out something and you get a call from there, right? Sorry, you get a call from some place and you spot somebody handing out something. Not that comes under strictly under reasonable suspicion. You're allowed to investigate on that. You're allowed to talk to them, get their ID, question them, and if they refuse to do so, you have to tell them, okay, sir, I will be detaining you if you refuse to comply. It's as simple as that. And they have to, but always remember, as a police officer, you have to be transparent as well in some things. You have to get to things, like you have to tell them that, sir, okay, I won't be searching you, but I'll be needing a positive ID on you. Okay, so that thing should be there. Always remember that. Now comes the what Also, just when Hans says if they fail to comply by not giving their IDs or not removing the mask, it gives you probable cause to arrest them based on they are disobeying your orders as well as obstruction of justice. Like you need to know it's legally, yeah. Because when you respond to a suspicious activity call, your investigation starts, right? Your investigation starts, you get into situation legally, you are getting into some situation, and you are what do you say, investigating on that area. So if somebody refuses to do so, they're hampering your investigation. Somebody is interfering and they're hampering your investigation, or let's say somebody is refusing to do so, to comply, so that comes under obstruction of justice. That will convert into from reasonable suspicion to probable cause immediately. Okay, now comes the second point, what Rock said. Now let's say I got a call from the area, I saw somebody handing over something, and I decide to wait. I don't go and talk to them. I decide to wait. And I see them handing over some stuff. Okay, now what happens is they're handing over stuff, and again I get the call. I see them handing over stuff. Again I get the call of, what do you say, this thing, reasonable suspicion call. So that will become reasonable suspicion, that will become probable cause immediately, because you saw them handing over something, and then you were like and the call also came from that area. So that is like basically right in front of you a drug sale happened, because a local called you up and said that a drug sale is happening over here, and you saw somebody handing out some stuff. Is this point clear? Okay, Hans, I think many people will be again not cleared about your last Yeah, point. you clear it out then. Yeah. You clear it out. Okay. बहुत लोग का माइंड में ये होगा, अगर रीजनेबल सस्पिशन है तो हम डायरेक्टली डिटेन क्यों नहीं कर रहे. तो जस्ट अ थिंग, अगर तुम्हें कॉल आया, तुमने हाँ देखा कि उसको पकड़ते हुए, हाँ तुम जाओ, तुम डिटेन कर सकते हो, बट एज a part of PD we are requesting you to provide a little bit more RP. तो पहले जाओ बात करो, and if he is like completely denying your what we say words, then yeah, go ahead for a detain, but yeah, don't just directly go and cuff. ये कहने का मतलब है हमारा, you are authorized to do it, but
prefer to give more RP to the person. Are you getting us? Like ये point है उसका Hans का to provide more RP rather than going directly go and simply cuff him. Is it clear या किसी को अभी भी इसमें doubt है? Anybody has any doubts? No, sir. Okay, yeah, so you can retain him and okay, एक चीज और बताता हूँ. Frisk command में क्या होता है? Frisk is about guns and all that thing. तो drugs नहीं आते. तो mostly अगर उसका gun नहीं होगा तो वो ज्यादा कुछ issue नहीं होगा. तो but RP करो पहले, उसके बाद ही जाओ उसके detain पे. So don't go directly, please. Like that's a request from Hans. Now comes the second point, the main point. Now, what if you found somebody in a suspicious area call, you had ID check on them and you warned them and you left the area. And now again you got the call of drug sale from the same area and you found the same person. And you then what to do, right? Then it comes under probable cause. It directly comes under probable cause when it's their second time. But don't start pointing weapons directly on the people. Okay? Don't start cuffing them. Okay, there's somebody hiding in the bush. Fuck. Yeah. मेरे को एक चीज बतानी थी कि I have seen officers detaining people in felony. Yeah, felony stop is there. Felony, they will be detained. नहीं detained like without proof वाला scene बोल रहा हूँ मैं. There is मतलब कि कैसे मतलब समझाने में. I mean, I'm not getting you it. don't have any reasonable suspicion or probable cause. Under felony stop ना. felony stop हुआ है तभी ना जब कोई suspicion हो गया या probable नहीं cause. बिना मतलब का हो रहा है मैं ऐसा बोल रहा हूँ. He means to say that कि वो felony stop without reason नहीं हुआ होना था चाहिए instance था. वैसा. ऐसे मतलब एक बार नहीं हुआ, मैंने ऐसे 3-4 बार देखा है उसी. So if you have clips for that, just forward कर दे हम. नहीं बस मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसे No, clips no. नहीं है, just to let. I'll be very clear on the felony stops. There is only there are. भाई कल करते हैं ना इस पे बात. कल मीटिंग है ना उस चीज की. कल करते हैं इस पे कल करते हैं. वैसे भी there will be training sessions like this on particular situations frequently. So yep. Walker, do one thing. Take the screenshot and let me know who the people who did not come and who did not post up a reason or DM you or me or anyone the reasons. Okay. I will take some sort of action against them. Okay, and let them know as well. So now comes the main point, is that second time what you do. Now you go there second time, you see the same person and you tell them, okay sir, I have spotted you again over here and again from the same area I'm getting the same call. So what I'm gonna do, don't start directly pointing weapons and cuffing them. Don't do that. That is like dirty job you are doing. Directly just going in, pointing the weapons and telling them to put their hands up, and if they ask you, just say, okay sir, you are second time here, so I'm gonna cuff you up and I'm gonna search you up. No, you have to talk to them. RP is not cuffing somebody. I'll tell you. Okay, out of the topic, कुछ चीजें दिखा के बंद करूंगा. It's off topic from this training. The biggest L a cop can take is the paperwork, in my opinion, personally. Is arresting somebody, bringing them to PD, take the fingerprint, attach photos, blah blah blah. That is the end of cop RP, in my opinion. That is the end of cop RP. You are stopping your own RP that way. Okay, so you don't have to directly go and start cuffing them and start searching. No, you have to go and talk to them. Talk to them and okay sir, this is happening again, so what I'm gonna do is that I'm gonna bring my K9, if you have a K9. So there are two situations. First, the K9 thing, I'm gonna bring in my K9 and he's gonna sniff you up, and if you find something suspicious, and then we'll go search you up, and if everything is clear, you are free to go, but if everything is not, you'll be get in. Okay, now here comes the next thing. The other person, now you will say that the other person doesn't comply. Obviously he won't comply. Why would he comply? He will start arguing with you. It's as simple as that. Okay, he will start arguing with you. So what do you have to do? He's not complying. Obstruction of justice, again the same point. You are under a probable cause and you are not complying, so you have to use force. You tell them, you exchange dialogue. Yeah, what?
Okay. Is You there any exchange HC? dialogues. You talk to them. नहीं, Okay. नहीं, Talking नहीं, is नहीं, RP. you'll Cuffing get is not RP. Cuffing is मतलब who basically will you what is examine cuffing. me This is whenever I cuffing. I'll smoke tell weed, you. huh? Again, You get basic thing. or like I have when to you tell will you. examine This is me cuffing. after like That's it. हाँ वही मेरे को चेक करना Cuff him था up. वीड वाला Trey, can you move? तो Can you move now? that not Trey, happens like can you that. You move? have to Speed? like you know you have That's a it. thing End police of RP. action then examine The them. end. I got it. मेरे को No, वो this वैसे is not काम नहीं RP. करना This is होता है this is Tested competitive. my GSR. Fucking RP competitive. You. Is it This have positive? been. Huh? हाँ This क्या is बोल रहा this is not good. I don't Huh? want. क्या बोल रहा मेरा GSR पॉजिटिव आया क्या? एक मिनट यप हाँ? हाँ यप Fuck. अरे I shot a reverse like that's it. It's a rubber bullet. हाँ रबर बुलेट कहाँ जाते हैं एंड तुम्हारे पास वीड है अफसर आपके पास वीड है नहीं I'm gonna cuff you up and I'm gonna search you by force then because you are under a probable cause now, and I have the full authority to do that. Okay. Now then you can cuff them up, search them up, and if you don't find anything, you let them go. If you find anything, then you take them. Okay. Now if you don't have a K9, now the second point, if you don't have a K9, if anybody wants to make notes of it, make notes of it. Okay. Maybe you will remember this, and my stream will be there. It will be public. You can anytime get into that thing, get on the stream and check the thing for reference. If you don't have a K9, second time you saw somebody in the same area, you talk to them, you tell them, okay, sir, this is happening, please tell me that what is happening, why are you doing this, matlab ki, what are you handing out. But he will say, I told you I'm handing out some, let's say something, okay, but you tell them, no, it is not that. Now I know because the local called me up. He said that somebody's handing out something very suspicious over here, and you are found here for the second time, right? And you talk to them and you give them a chance to talk back, right? Now then if the story doesn't match up, as Levi said, story doesn't match up, is giving very shitty reason, you detain them and cuff them up and search them up. Is everything clear till here? Everybody, Yes, anyone has any shitty question you have, put it on me and I will answer it very calmly and systematically. मेरे को एक डाउट है अंश भाई अभी जी, राणा। कल देखे हमारे पास K9 नहीं था राइट इन दैट केस कैन वी यूज दैट मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिन टारगेट या नहीं Examine target is there. we can we use it like अगर वो वीड यूज कर रहा है हमको Examine target is simple. I'll tell you. Examine target is like just stand at one place. Examine target is simple. Examine target is nothing but what you see. What are you seeing? IRL, let's say you're standing in front of somebody and you, where is it? Police actions. Examine target. And you see that, okay, why are you sweating? Why are you breathing so heavily? Right? yeah It is like that only. Yeah, even if you like make smoke a ना reasonable तो suspicion it's like comes like एक मिनट smells मैं like ये आपको दिखाना smoking चाहता हूँ weed या फिर smells like एक alcohol if you एक drank मिनट मेरे alcohol. पास वीड That's है only मैं for यूज like a करता हूँ personal. मेरे पास वीड है एक बार चेक करो ना वो आपको स्मेल कर रहा है क्या मैं वीड पूरा स्मेल करने के बाद एक मिनट रुको वीड स्मेल कर लूंगा हो जाएगा ओके उसमें रेड आइज दिखता है वीड का आई थिंक हाँ। स्मेल्स लाइक मैरिजुआना हाँ एक मिनट चेक और कीजिए वेरी ना नोटिसेबल भी होता है नॉर्मल भी होता है सो But अभी smoking एग्जामिन and कीजिए selling is like No, different like things. many people are not using this. Okay, body sweat. Uh, you know, you can ask them. Have you smoked any pot recently? Smells like When marijuana. was the last? Okay, you ask them, bro. I can smell some pot on you or some weed on you. Like you have you smoked recently? You don't go and directly say there is weed in your pocket. No, you ask them. Have you smoked it recently? I think When the last time you ये smoked? Yeah. हंस भाई इसका खाली जब बंदा यूज करता है उसका आता है ये एग्जामिंग टारगेट उससे हाँ कोई ये मतलब मत नहीं करो वो ड्रग्स बेच रहा है तो उससे very कोई correct. मतलब नहीं Examine होगा target, you तुम्हारा can do it. It's हाँ Yeah. I'm simple. saying It is a server do mechanism. examine target Yeah. but don't use it to turn your reasonable suspicion into anything. Nah, Yeah. nah. Because Don't like use really that. small It is for basically it is for your target. RP only. It is for your RP only. Okay, your RP is getting enhanced over here, You right? can use
You can use these mechanics to crack onto his story. If his story is weak, थोड़े बहुत examine him and वारस then कुछ start नहीं हुआ questioning ब्रो. about those, and his story will थोड़ा start अभी falling जो apart रेड हुआ slowly. क्या ये Simple, मीटिंग जब तक the चल simple रहा examine है target. तब Okay, तक वो वाला what सर्वर happened? Did दिखाओ. you have any workout or anything? You're like you were running, you know, like that. Don't use it like, bro, you are sweating. I can tell body sweat, labored breathing. What is happening? No, don't be that dumb. Got Okay, it. use it. This is for RP purposes. So is that clear to everybody? Yep. मैं दिखा The दूंगा वैसे second स्ट्रीम point, बंद reasonable कर. suspicion, probable cause, drug calls, everybody cleared. Command members, whoever is the command thing, Yes. head sergeant, senior officer. If senior officer is not clear, command member will tell you again. Their job is there to train you. You can ask as many questions to them. Okay, now comes the next thing. Now sometimes what happens, what I do, how I like to do it, you know, let's say for the first time I found somebody and I talked to them, you know, I had a word with them, I had a chit chat, blah blah blah. Okay, you can always request them. Always remember that you can request them. You can say that, okay sir, if you mind, only if you allow this to be used only under reasonable suspicion, not under probable cause. Always remember that. Okay, you need a permission for the other person. You know, you can tell the person, sir, only if you allow, can I get my canine sniff you and anything, right? You can do that. But if they say no to it, you have to say, okay sir, it's fine, chill, I'll go. That's it. Okay, that is like you tricking them, you know, you are tricking them into something. That is also one thing you can do. If you want to catch somebody, it's okay, you can use it, do it smartly, giving them more RP. They will say, no, I am allergic to dogs. I think there was somebody yesterday at the pier, right? Asuna is there? Asuna is not there. There was somebody yesterday at the pier, and he was like, he was selling something, and I went there and I talked to them, and I get an idea. And at the end, I said, if you mind if I get my dog sniff you, only if you allow. He said, no, I'm allergic to dogs. Then I was like, okay, it's fine. Then I left him, and I told him, okay, you can go, but clear out this area. I told them simply. So more of an RP is there. Now the thing comes, which happens most of the times. Now, whatever I said, this happens in fairy world. This happens 1 in 100 times that the person doesn't start running or something. You know. Now comes what happens if they start running. You know. तो पारस उतना कुछ अच्छा Now you नहीं will say, like, sir, अगर ऐसा बात करने लगेंगे, if we start talking, they will run away and it will hamper the RP. Why are you going alone on a reasonable suspicion or on a suspicious activity call in the first place only? Get a unit with you. Only one guy, let's say, can anybody come over? Who's on the bike? Who is this on the bike? Come over here. Yeah, let's say Aaron is there, okay, and I am the first one to respond, right? And my backup is there, right? And one unit is standing there. So what happens is, I should be the only one talking to Aaron, right? Or maybe one more officer who's my ride along, okay? And the other unit's job is not to come out of the vehicle. Other unit's job is to have engines on and be ready, just in case Aaron starts running and going towards the car, going inside. Okay, he gets into car, takes off, the other unit goes, boom. That should be the whole system. Okay, now that is there. Now comes the next thing, south side. I was actually looking at some situation which happened few days ago in the Vagos area. That is a very good example, by the way. Just a second, give me a second. Yes, once the meeting is done, stream बंद करूँगा. Yeah, can you guys hear me? Yes. Yeah. So I think Coco, Raptor, and few more people were there. Are they here? Anybody from the Vagos shootout? Yesterday, I guess. I'm here. Yeah, I'm yesterday. Yep. So I was looking at the situation. I think somebody was streaming. I forgot who was streaming at that time. Okay. Now, Baby Gupta and Aaron, don't move. Okay. This is the guy
who was selling drugs, and here was a girl. I think it was Asuka. Aap the na? It was you, right? Yeah. Okay. So what happened is, this guy standing here, the girl is standing there. Okay, and there are houses behind, and there are people everywhere behind the houses. Now, what the cops are doing? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cops are standing here, and 5 of them are looking at them. Like one guy's job, 2 guys' job. What the fuck? Other 3 are doing? Okay. Start responding tactically to the south side. Start giving it a certain importance. That's the second thing. Start having a fear RP, not like not fear RP is not that. Okay, there's a misconception in people's mind that fear RP is basically a darna, that you're too scared. It is not scared. There should be some fear in you. Okay, fear means that you're cautious. Remember that you're cautious of responding to the south side location. Let's say if you want to respond to it, that is up to you, but you should have that cautious fear in your head that, okay, this is a gang hood, I am going there, and there have been reports of shooting over there, and I can die as well, so I have to get my units there. Now you get the backup. That's the second thing. Now you got the backup, right? But what is happening still, that fear is not there. Fear RP responding to southside doesn't mean only responding there with units. It doesn't mean that only. Okay, it means that, but not only that. It means that you get your units there and you start thinking tactically. You are more cautious there. You are more careful there. You are doing a very good RP there if you're cautious and careful. You know that there will be people around. It's their area. It's very violent area. What do? You do that. Okay, 1 or 2 people stand and talk. Rest of the people scout. Rest of the people can scout, right? That just in case if it turns into a shootout because this area is hot and this area is violent, you are ready to respond to that. I'm not saying that you have to win that. That is a gunplay thing, win-lose gunplay thing. That is your aim, shooting, whatever. You die, you win or you lose. I don't care. You catch them, you don't catch them, they loot you, they dump you. Whatever happens, I don't care. Okay. What you have to do from your side, you have to portray that proper tactical cop RP while responding into a gang area on a drug call. Okay. More of dialogues, less of shooting, less of cuffing. Remember that. Okay, there's a very good example. Just a second. I did that on purpose few days ago. If anybody remembered, there was a traffic stop at the Strawberry Avenue of a purple Bentley, I guess it was. Bebo, you were there, right? I was there. Yeah, people were there, right? I did that on purpose, by the way. That was just to showcase that how these things are to be handled. That was a purple car, right? So what my character knew, what in character information I had, is that few days ago some people wearing purple mask with purple car got into PD. They started shooting, and there have been regular reports of people from the purple color thing shooting cops and everything. And most of the situations are always ending up into a shootout or a violent activity, right? So I had that fear and caution in my character had that fear in his head that, okay, this is a purple car, this guy is wearing a purple bandana, and this guy is dangerous. So I have to be cautious. What I was doing, Caudal, tell me, while talking About to him. what? I mean, you were trying to get as much as information you can. And I was continuously telling people to be on a certain point. I think I was telling one guy, explorer, I was telling to roam around the area, right? So you have to do that. You don't have to like collectively go at one place. सारे लोग एक जगह आ गए. Sorry for Hindi. Some people, all the people at one spot, talking to one guy and having no fear, chilling and treating it like a casual situation. No, that is a gang member. That is a violent character you have in front of you who has a history of shooting cops.
So you have to be cautious. I was cautious. I was telling Explorer to move around. I was telling one interceptor to stay at the back of the car just in case he takes off. I was telling other Explorer, I think Anubhav was there, right? Anubhav, you were there with Maya? Who was there Yesterday? with Maya? No, a few days ago. Purple I was Bentley. there No, with her. yeah, you were I there was. with Maya. I was telling Jungle to, stand by on the other intersection, just in case somebody comes up from there. His backup came and they were with the backup and they could not do anything, right? But I'm not saying that is an achievement. I'm saying is that I was cautious enough. So you have to deal with those situations that way only. Okay, and always remember Roger that I have seen Roger that doing these things only him and a few cops only, and I want everybody to do that. Don't try to escalate the situation. Try to de-escalate the situation. Hello? Okay. Yeah, I found this Your lying job around. is I don't not know to what it escalate. is. Your job is to de-escalate. Looks important. Okay. Have your lethals out in a certain situation. You have fear. It's fine. It's up to you. Don't start pointing weapons. No, leave it. Next. Don't start pointing weapons on somebody. And No, you always can't. remember, Leave the on area, a sir. drug call, बाहर जाइए. Okay, man. if you are able to convince somebody to search them up, don't cuff them first. First search them up, because you don't have the right to cuff anybody until and unless you have the proper evidence. Remember that. Cuffing somebody means detainment. Proper evidence, which means probable cause, you don't have the right to do it. You tell them, okay sir, face towards the car, I'm gonna search you up. You search them up, you find something, and you tell them, okay sir, I found weed on you, and you have to pass on information to the other person. That is a cop's job. Anywhere you go, any server you go, even in real life, a cop's job is to pass on information to the suspect. The suspect has the full right to know it. You give them more RP. Okay. You found weed on them. Okay, maybe he will try to run. It will turn into a very good chase. Maybe he will his boys will start shooting, right? As soon as you say that, he gives a call on the radio, okay, shoot, right? It will turn into a shootout. Maybe it will turn into some other good RP. You never know. So that's all I want to say regarding the drug calls. I won't be pulling it long. Drug calls is basically I have one last point on this. Go on, Gary. Like, just for one suspicious activity call, you need to think about the optimization of your resources as well. Like, agar ek call, like if one call is coming, like everyone is like, yeah, take 2 charger to intercept a one bike unit on standby, just for one suspicious activity call. Like, I knew that, like, if the area is hostile, yeah, go with the backup, but don't take all the resources just like for one suspicious activity call. And if there's just one person standing and doing RP with you, right, your aim should be to promote the RP, not just to win the situation. Winning the situation, I told you, you're not winning situations by arresting people. You're losing it. You're taking the L of paperwork. Biggest L somebody has to take is paperwork. Who likes paperwork? By the way, how many people like to make MDW? I don't. Anyone who likes? Say it. I want to know. Who likes making MDW? नहीं, I tell. अभी उन सबका काम ही है वो तो करना. You are avoiding काम है that is there, but who likes to make? Who's like? मतलब बनाने में जोर नहीं आता बस. I love making MDW. Anybody? ऐसा कोई नहीं होगा. कोई नहीं होगा यहाँ पे. मजा आता है. हाँ मतलब ऐसा है, like ऐसा नहीं कि चार If it's लोगों का interesting, काम yes, लेके बैठ it जाओ. is. No, I think it's more the general. talking about the general. This is most of the time. चैनल में पूछ रहे हैं हंस, बता दो किसको पसंद है. Anyone. Nobody likes it. Okay, Plus one from my side. कल करते हैं बात इस बारे में. So if you don't like it, why are you trying so hard to make it? I'm not saying leave them. I'm saying portray proper RP. You wanna catch them, catch them. If you wanna do try hard, there should be some reason for it. Same thing. वो purple Bentley. I made a very good reason out of it. I said, okay, these purple people breached inside PD today this morning and shot the police officers. Now, okay, bring in the Air1, bring all the interceptors. There is a proper RP behind that. So there should be a proper RP. Even if you're trying hard, it's fine. It's up to you. It's up to your character. But there should be a reason for that try hard as well. Okay. Always remember that trying hard is a term created by bamchas in the fucking streams and everywhere. Okay.
that try hard is a bad thing. No, that is RP. If you want to do try hard, there should be proper RP. That's all I want to say. And I'll be very strict. I'll be very, very strict from now on. If I see somebody directly going coughing, starting doing that, actions were there, but this time there will be more severe. That's one thing. Second thing, start providing RP to yourself and to others as well. Always remember, whenever a cop provides some RP to any other RP player in the server, any other criminal, civilian, gang member, anyone, they are providing RP to themselves as well. Okay. Third thing, nobody, anyone seen, again the same thing I'm repeating it because it's important and very important, and it's been pissing me off since 3-4 days. I've been looking at things and they were like really dirty. Always remember, whatever wrong you do, people are not gonna tell you that you're a bad cop. People are gonna come up to me and tell me that you're a bad cop, that your officers are doing that. So I am a kind of a person who doesn't take, जो मतलब कि सुन के नहीं लेता. ठीक है, कोई somebody comes up to me and tells me that you are not a very good chief, ये वो, okay, that's gonna piss me off ASAP, and that is the reason I've called the training. So that's all for today. That was the 37 call training. Next time there will be a 99AB training, okay, and that will Yes. also include the pursuit trainings as well. Tomorrow there is a meeting, a feedback meeting from you guys on Discord. Please be there. That's all. Anybody has any doubts can ask me. Go back to your RP. अपने पॉइंट रेडी thank you, रखो कल sir. के लिए। जिस जिसको जो भी दिक्कत है, जिस जिसको जो सजेशन देना है, अपने कल रेडी रखना 6 बजे की मीटिंग के लिए, ठीक है? All right, sir. That's all. If anybody wants to go. I'm here till 10-15 minutes to take doubts. If anybody has doubts. किसी को डाउट है? मुझे 37 एक है। कॉल का खाली। Go on. हाँ 37 का ही है। बेसिकली इट्स द सेकंड टाइम वी आर कैचिंग दैट सस्पेक्ट। वो सेकंड टाइम हम लोग देखे, मेरे पास K9 है मेरा, एंड व्हाट आई डू इज कि मेरे पास प्रोबेबल कॉज है उसको स्निफ करने का। सो ही डजंट गिव हिज कंसेंट कि मैं स्निफ नहीं करना चाहता हूँ। इन लॉफुली आई कैन डिटेन हिम एंड स्निफ, बट वो बोलता है कि मुझे एलर्जीज है एंड एवरीथिंग, सो ही विल टेक इट टू So कोर्ट। yeah, दैट्स okay. ओके राइट? Then no. Then don't let the canons, and if you search them up, you tell them, okay sir, I'm gonna frisk you and search you up. Then you have two options. है आपके पास, सिंपल करो ना, उसको सर्च करो। Yeah. ये लॉफुली डिटेन करके Work according to their RP, na. If he's saying I am allergic to dogs, okay sir, I have another option. I can search you up. all right. But remember that second time search is also not mandatory. If the other person is giving a very good reason, very good RP, then back of the mind you know he's selling drugs, but he's giving very good RP, innovative RP. You have to leave them. Your job is to Also, promote RP. Yeah. One of the worst things a criminal can go through, and this is talking out of experience, is setting up RP, spending time to set up a whole plan, a whole an excuse, whatever, taking your time, the effort, and then a cop just instantly denies it and arrests you. That is one of the worst things that can happen to you as a criminal. So try not to do that. Always give people a chance, to provide their RP. Yeah, one more thing. One point I forgot to cover. I've been selling weed from Cream Character on very hot areas. By the way, I don't sell at freaking what do you say, Palito or somewhere. I've been selling inside the city just to check as well, right? I've been doing that. I'll be very honest and straightforward. I'll be doing that. Today I was selling weed at the fucking Dean's World. 1 hour I sold weed, nobody came. At the end, after 1 hour, when I sold like 100 baggies, Hardy came with his team. People are not responding to 37 calls. Start responding. Just open the dispatch and check how many calls are we getting. Just hit the dispatch Okay. once. Now How many 37 calls officers are on duty? okay. If there is no other priority call, you're on code one. Respond to 37 calls. The reason for that is it's been happening a lot. Okay. With that, you will be able to promote RP in the server, in the whole server. Trust me. How? I'll tell you. I am selling weed. I come from 6 to 12 in the server, and I sell weed a lot. Nobody is responding. I will sell it. Now, if cops start responding, I will see cops responding. Maybe I'll get arrested once. I will stop selling weed at that time. I will reduce it and I will go for some other RP. अब
even 6 से लेके 12 बजे तक I will be grinding and not doing any RP, and you guys responding to that, not responding to that. I'll be just grinding, not doing any RP. The server is not getting any RP out of me. I'm just a, what is a liability to the server as a crimrp, right? Because I'm just grinding at that time, not doing any other RP. Simple as that. So I'm just a liability. I'll be honest. So what if you start responding and I will say, okay, bro, at this time cops are responding. I will reduce my weed selling. I will reduce my grind, and I will more focus upon RP. I will do some other RP. I will start finding other ways to make money, which will lead into Get the RP. vehicle, man. So you guys are giving RP to others only. GTR नया वाला. So from a liability, I turn into an asset for the server. GTR ये देखो. Sounds अरे actually मतलब question. मेरा एक क्वेश्चन था. क्वेश्चन क्या जो डाउट था कि अगर मतलब जैसे अगर हफ्ते 2 हफ्ते तक भी अगर आपके उससे ज़्यादा तो एक आध भी नहीं पकड़ा गया तो उससे तरफ से वो कोई इशू तो नहीं आएगा ना कि क्यों नहीं पकड़ा गया एक भी. पकड़ना is not a goal. हाँ नहीं है ना पकड़ना. Don't be confused, guys. Catching somebody is not the goal. मतलब cops are the supportive. Okay. I'll be very straightforward and strict on this. Catching a criminal is not the goal. The goal is to promote RP. That's it. मस्त कॉप गाड़ी दिखाता हूँ. The goal is to promote RP. Catching somebody is not. हमेशा नहीं जीत सकते भाई. नहीं हमेशा नहीं. जितना नहीं है. हमेशा भाई नहीं. मैं सही बात है. रात के टाइम पे मैं भी 2-2.5 साल से कॉप आरपी खेल रहा हूँ. I know. सपोर्टिव आरपी देनी है ना. Bro, you guys should do RP at DNA batch, NA shift. देवी तेरे को जीत चाहिए क्या देवू? नहीं मुझे जीत नहीं चाहिए लेकिन ये जो अभी आया We even at the NA shift they don't even follow guys in the. Wait guys, कल है ना मीटिंग, इस चीज के बारे में कल बात करते हैं. आरपी करो अंदर जाके, टाइम हो चुका है. ठीक है 8 बजे. That's all everybody. मैं भी जा रहा हूँ. जिसको कुछ दिक्कत है वो रुको, नहीं तो और सब जो कुछ प्रॉब्लम है 37 को लेके खाली. कमेरा वो गाड़ी देखो बे, कमेरे को आगे पीछे गाड़ी रोक दो. देखो गाड़ी देखो भाई, कॉर्वेट का. ठीक है. और रॉबरी दिखाऊंगा गाइस, तुम लोगों को रॉबरी भी कैसे होता दिखाता हूँ. Look at this vehicle, man. Dodge Challenger. बंद. ठीक है. और एक मस्त गाड़ी दिखाता हूँ. ठीक है. डाउनलोड होने दो. कैमरा, हाँ भाई कैमरा है. ये देखो. ओवे इंटीरियर देखो इसका. इंटीरियर देखो गाइस. So are you learning to drive? I'm not learning to drive. There is a server where we are hanging out. It's a QB, basic QB server where we got all the vehicles and all the vehicles, what we say, vehicle resources installed, or we got the resources.
Forward C, not too fast. It's like just hangout place. And guys, we have custom handling with Alice. We have custom handling. Okay, R8. R8. You want to see R8? Yesterday someone was asking for R8. It will take some time for the it will for taking up a download. Guys, you remember Russia ये कर रहा था, क्या बोलता है? Oh shit. These are the same vehicle using which Russia does the racing in NP. LMC guys are too calm, bro. Okay. Explorer I have shown you yesterday. Charger I have shown you. Handlings default or no handlings. Few vehicles are custom handlings, not default. I see this vehicle, and this vehicle is like for a few days. That's it. We're having fun with the racings. Custom, not you say the default one. No. Okay, but I learned where the vehicle is going out of control. I tried to learn something. Done with this. Okay, let's try. Let me show you something. Electric, and look at the pickup of this vehicle. Okay, now normal GTR R35. The normal GTR.
Maximum the vehicle reaches 110 or 120 without upgrades. That's it. Not more than that. Okay. I think all the vehicles are done. These are the vehicles which we have. And the normal whatever RS, Papu, P, you, and I want to see robberies, right? Let me show you first the Pelito one. Okay, tab, do I have those? I need mites. 17 thermal. This is how the robbery works, guys. तो राणा सर ये कौन सा सर्वे है? खुद का सर्वर है, मस्ती करने के लिए ऐसे ही स्टार्ट किए थे. खुद का सर्वे, just we started for fun. Okay, so see, if you try to, okay, without the drill, if you do it, it will say that lockers are too strong. Admin God mode on कर रहा हूँ guys. Reason is ठीक है, God mode on कर रहा हूँ. Also, okay. अगर आपके पास ये नहीं है, ड्रिल नहीं है, ये ड्रिल नहीं है, ठीक है, तो when you try to see, looks like the safe is too strong. So when you have the drill, use the drill to break it. Basic QB server है. मैंने सोचा VLT नहीं bro, it's not VLT. VLT इतना मैं ऐसे लीक्स दे दूं नहीं bro. हमारे पास ये लीक्स नहीं है. जस्ट फन के लिए बैठ के रात में बैठ के बना रहे थे एंड बन गया सर्वर. ओके, थर्माइट का गेम दिखाता हूँ. ये जलना शुरू होगा, पूरा पूरा जलना शुरू हो जाएगा, बंदा मर जाएगा. वारे वारे रियलिस्टिक. क्या भाई वारे वारे रियलिस्टिक ज्यादा कर रहे हैं? अबे यार भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ. कल रात करा था. पूरा उसको 4-5 बार होता है वो. अबे इजी तो नहीं है गाइस, माउस यूज करना होता है. आगे पीछे हुआ तो देखो वो सर्कल बढ़ गया तो इन हुआ. अब तक बंदा मर चुका होता. मॉड मोड है, नॉट सो इजी. Give items, one might. Any idea VLT RP कैसे होगा? Bro, no idea bro. Just we are also curious.
थर्मेट हो गया। देखो अभी थर्मेट सक्सेसफुल हुआ, अभी थर्मेट जलेगी। यहाँ से बंदा को 3 सेकंड देता है, वहां से हटना है, ठीक है। एंड कूल डाउन होता है। द डोर इज ओपन, डोर ओपन हो चुकी। सेम अंदर जाओगे एंड सेम वैसे ही लॉकर ब्रेक करोगे इसका। एंड ये तो दिखा दिया मैंने रॉबरी कैसे करते हैं। अच्छा घर दिखाता हूँ। लॉक पिक भाई अलग ही है लॉक पिक। कौन सा घर किया भाई इधर? घर के इंटीरियर दिखाता हूँ। घर के इंटीरियर 5 इंटीरियर है, ठीक है। और हाउस रॉबरी देखोगे? और हाउस रॉबरी गाइस, दिस इज लॉक पिक है ऐसा। लॉक पिक लिटरली टू डिफिकल्ट जाता है जल्दी। रुक चुका। गन्स ऑफ पुलिस दिखाता हूँ मैं। ये हाउस रॉबरी है, देखो इधर आओगे एंड इधर कैसे होता दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर आया ई दबाना होता है, वो लास्ट टाइम वो वाला svrp वाला जो लॉक पैक वो सब होता था ना। अबे यार ठीक है, ये सब कुछ नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत दिखाऊंगा बस भाई, कितना करे बोर हो जाएंगे। ठीक है ये ऐसा होता है, ठीक है। एंड अगर तो ठीक है, ये खुद की घर है, ठीक है। अगर तुम ऑल्ट प्रेस करोगे एंड एंटर हाउस, ये खुद की हाउस है। देखो अब मैं रियल एस्टेट की जॉब है। इंटीरियर देखो, ये एक इंटीरियर है। ये इंटीरियर थोड़ा ग्लिच है। लाइट के नीचे होगा तो कैरेक्टर गायब हो जाती है। दिस इज वन इंटीरियर, इतना ही है इसका इंटीरियर, ठीक है। एंड घर के देखो एंड तुम ऑल्ट दबाओगे, देखो कोई घर पे तुमको आकर नॉक करा, तुम घर पे तुम रेड हो रहा है या कोई तुमको हुड पे आ रहा है, तो यू कैन सी इन दिस वे। घर के सामने कैमरा होता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। हाउस रॉबरी दिखा दिया। देखो ये दूसरा है और इनवैलिड हाउस टीयर। अच्छा टीयर गलत डाला था इसने। हिट कर दिया क्या उसने का? क्रैश हो गया। ये नहीं हो रहा, क्रैश हुआ। रॉबरी से तुम देख लिए। अगर इसमें कोई तुम रॉबरी नहीं देखे हो, दैट मैंने खुद नहीं देखा है। वो है देखो 114 स्क्रिप्ट है उसमें।
हम नहीं देखे थे कौन सा फन है भाई। एक बात बोलता हूँ, ये करने में, ये सर्वर सेटअप करने में, जिसमें ऑलरेडी क्यूबिक कोर अगर तुम सेलेक्ट करोगे ना, जिसमें सारे तुम्हारे पास ये हो जाते हैं, मतलब रिसोर्सेस डिफॉल्ट आते हैं, सिर्फ तुमको एक डेटाबेस सेट करना होता है, उसको सेट करने में पूरा दिन लग गया। जबकि ये देखो भाई, ये वाला देखो गाइस, ये वाला इंटीरियर मस्त है। गन्स ऑफ पुलिस दिखा दूंगा, तो रुक जाओ। ये घर इंटीरियर ये है। ये दूसरा इंटीरियर है। Head job to police. पुलिस दिखाता हूँ। This is Paytm लॉक्ड है, तो इधर कहीं से आपको ऑन ड्यूटी जाना होता है। हैं? ग्लिच है। इसका सर्वर ही राणा सर खुद का राजेश फन के लिए बनाए थे, जस्ट वी आर एंजॉयिंग इट। क्रैश वैश ना हो जाए भाई इधर। ये पीडी डिफॉल्ट एमएलओ नहीं है, इसने डाला है, ठीक है। तो ऑन ड्यूटी का कुछ सीन हुआ है। ऑन ड्यूटी तो हो चुके हैं, ठीक है। बॉस मैंने सब दिखाना था, पता नहीं कि आपने डेवलप किया गया स्क्रिप्ट क्यूबिक कोर का यूज। क्यूबिक कोर ब्रो, डिफॉल्ट क्यूबिक कोर है, डिफॉल्ट क्यूबिक। भाई पीडी का गन्स दिखा दूंगा, इधर डाला इसने। क्योंकि इसने एमएलओ डाला और वो नहीं करा उसने। पीडी का कार्बाइन, नॉर्मल कार्बाइन एंड बेरेटा है वो। मैं पूछता हूँ उसको कुछ करने के लिए, सेट करने के लिए, वो कर देगा। आपको अगर याद होगा तो वो है तभी दिस।
लेट मी शो यू समथिंग न्यू व्हिच यू नो. ये सब तो आप देखते रहते हो, ठीक है. Let me show you something. Something new. Did you see that Miranda count? Can you believe it? एक बात बोलो, ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है क्यूपी कोर से तो. गाइस मत बोले. ये सब मेरे को बैंक रॉबरी में मिली थी. क्या? Let me show you something. फायर फायर करके दिखाऊंगा. Yeah, I work with Scott Stevens. If by work you mean run ridiculous errands. You best lay low, bitch. Pero qué gilipollas. Hello, son. I see you finally remembered you have a mother on this green earth. Big Mama, that's the first place we win. Vinewood was sure something too. Oh, we've seen the Oriental देख लिया गैस. इसमें वो भी नहीं है. इफ यू सी तुम यहाँ कोरल आके बेच सकते हो, ठीक है. एंड ठीक है, यहाँ आओगे बोट लेके एंड तुम पहनोगे गैस टैंक. डाइविंग सूट पहनोगे, अंदर डाइव करोगे.
एक बात बोले तो अभी तक कुछ नहीं मिला, समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे करना है, क्या करना है। क्वेश्चन मार्क काइंड ऑफ थिंग कुछ दिखता है इधर। सी डाइविंग गाइस, एंड इधर ही नहीं, इलीगल प्लेसेस भी है तुमको जहां डाइव कर सकते हो। कुछ तो है, कुछ करना है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। टू बी फ्रैंक, देखो ये कोरल है, हम जो हम ये कर सकते, उठा सकते हैं। तो ओके, इसके बाद व्हाट डू यू वांट टू, कॉपरी ट्राई करें। क्या क्या इसमें क्रैश हो गया भाई, रिफ्रेश स्क्रीन क्रैश कर रहा है, उसको बोलना है रिफ्रेश स्क्रीन क्रैश कर रहा है। चलो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। स्ट्रीम कल मिलेंगे सुबह, बोया पे फॉलो करो, एंड इंस्टाग्राम फॉलो करो गाइस, यू हैव अ चांस टू विन व्हाट डू यू से आईफोन 13। एक स्टोरी है, स्टोरी पे, स्टोरी को फॉलो करो, एंड यू नीड टू डाउनलोड द गेम, ठीक है। यू नीड टू डाउनलोड द गेम एंड ऐप, एंड यू नीड प्ले एनी क्विज एंड विन इट, एंड विन ए यू नीड टू विन ए क्विज गेम, एंड उसका स्क्रीनशॉट आपको टैग करना है रेजिलेंस वालों को। You will have a chance to win what we say iPhone 13, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, until then bye bye guys, take care, stay safe, good night.